check, check.
Yes, welcome. स्वागत है आपका. That was the first delivery by Mithil Joshi. Leaving the ball well there. अंकित दाम with his lucky jersey number 7 on your screen. मित्तल जोशी जिन्होंने आज शुरुआत की है पिंक पैंथर्स के लिए इन द चैलेंजर्स फाइनल. देखिए कूल ब्रीज गोइंग अराउंड. ऑन साइड से ऑफ साइड पर ये हवाएं चल रही है और लेट्स सी क्या इसका एडवांटेज मिलेगा बॉलर को. अंकित दाम दिस टाइम couldn't connect that well. Stayed in the hands of the wicket keeper Ankush Oberoi. So dot balls in a row. यहाँ पर पिंक पैंथर्स के लिए एडवांटेज जरूर होगा बिकॉज विकेट से शुरुआती कुछ समय पर मदद मिल सकती है बॉलर्स को. ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा था. लेट्स सी क्या वो एडवांटेज पिंक पैंथर्स के बॉलर्स ले पाएंगे या नहीं. अंकित दाम प्लेसिंग इट वेल. स्टे टुवर्ड्स दैट फील्डर in the point. So एक और डॉट बॉल. So एक अच्छी शुरुआत, एक मनचाही शुरुआत यहां मित्तल जोशी के द्वारा हुई है. अच्छा लग रहा है कि आज चैलेंजर्स फाइनल्स में पिंक पैंथर्स और गोल्डन टाइगर्स के बीच ये कड़ा संघर्ष हमें देखने मिलेगा. We started at exactly 4:20. Another dot ball. So both are well-known, a popular umpire right now in the middle. Our main umpire, Mr. Kiran Bhosle, and the onside, the leg umpire, Mr. Nilesh Dankavde, and our proud scorer Saurabh is with us. Mithil Joshi. Oh, that was a quicker one by MJ. एक जबरदस्त शुरुआत हुई है. पांच गेंदें हो चुकी है. 5 गेंदें हुई है और रन एक भी नहीं है. स्कोर लाइन को आप मत देखिएगा दोस्तों. मेरी आवाज कुछ नहीं का. मेरी आवाज बहुत अच्छी है. मैं हूं आपका अपना अभिजीत, कमेंटेटर, होस्ट, एंकर एंड आपका दोस्त. सीजन 4 में लगातार साथ बना हुआ है स्पोर्टिविटी वेंचर्स के साथ. अंकित दाम से ये पहला अच्छा कनेक्ट होता हुआ बॉल नजर आया. मेडन ओवर के साथ चैलेंजर्स फाइनल की शुरुआत हुई है. सौरभ, दैट इज अ वेरी गुड स्टार्ट बाय टीम पिंक पैंथर्स. पिंक पैंथर्स के प्राउड ओनर डॉक्टर मिशेल पारेख, को ओनर विशाल मेरवाना जो कि कैप्टन है जिन्होंने आज टॉस जीता, एंड आइकन मित्तल जोशी वाइस कैप्टन ने शुरुआत बहुत ही होनहार की है. तो दूसरी तरफ गोल्डन टाइगर्स के प्राउड ओनर एंड कैप्टन विराज गांधी, को ओनर केडी सिंह एंड आइकन राज गोगाटे इस मैच में अपने परफॉर्मेंस को बिल्कुल बेहतर तरीके से दर्शाना चाहेंगे. धीरेन डेडिया, मतलब क्या शानदार इनका डेब्यू रहा है. सौरभ, धीरेन डेडिया ने स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग में अपने क्रिकेटिंग टैलेंट से बहुत सारे अवार्ड्स ही नहीं बहुत सारे दिलों को भी जीता है. डीडी, नो ए, नो बी, नो सी, ओनली डीडी. ओह, ऑलमोस्ट कमिट हो गए थे जतिन मेहता. जतिन मेहता आज ओपनिंग करने के लिए आए हैं अलॉन्ग विद अंकित धाम. अंकित ने पहले ओवर में 6 गेंदें फेस की जिसमें से 5 गेंदों पर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल नजर आया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश की है. दूसरी ओवर की ये पहली गेंद स्पॉट ऑन थी, दूसरी गेंद भी सही थी. यानी कि हमारे आज मेन ब्रॉडकास्टर है धनंजय पवार, जिनका कभी नहीं जाता कोई खाली वार, चाहे हो शनिवार, रविवार या सोमवार. धनंजय पवार इज ऑलवेज रेडी. हमारे साथी दोनों यंग कैमरामैन है जो हर एक लाइव एक्शन को कैप्चर करेंगे. और क्लीन बोल्ड, धीरेन डेडिया स्ट्राइक्स इट फॉर पिंक पैंथर्स. जतिन मेहता इज गॉन फॉर गोल्डन डक.
सॉरी वॉक टूवर्ड्स दैट पेविलियन। जतिन मेहता जिनकी आज सोच बिल्कुल सकारात्मक थी, लेकिन कहीं ना कहीं बॉल की बाउंस को और बहुत ही लेट खेल गए और वहीं जाकर फंसे जतिन। एंड धीरेन डेडिया देखिए अपने मिडास टच में है, अपने पिंक फॉर्म में आज पिंक पैंथर्स के लिए पहला विकेट ले लिया है। धीरेन डेडिया, चलिए तरुण जैन या फर्स्ट रन ऑन द स्कोर कार्ड। यार ये पहला रन है चैलेंजर्स फाइनल का, क्योंकि विकेट कॉलम की शुरुआत हुई, पिंक पैंथर्स ने शुरुआत की विकेट से और ये पहला रन तरुण जैन ने निकाला है। टीजे आप जरूरी है टीजे का विकेट पर बने रहना अलोंग विद अंकित धाम, क्योंकि गोल्डन टाइगर्स के लिए एक ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कैप्टन वीरू ने हमसे बात की थी कि एनी फाइनल और एनी ट्रॉफी मैटर्स अस द मोस्ट, तो अगर वो चैलेंजर्स फाइनल की ट्रॉफी को जीतना है तो आज अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। दिस इज द मोमेंट, अभी नहीं तो कभी नहीं। धीरेन, चांस था लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की फील्ड और मस गली के फील्डर्स के ऊपर से चली गई गेंद एंड अंकित धाम के लिए पहला चौका। यार हाफ हार्टेड शॉट था ये, NB4 मिलता हुआ यहां अंकित धाम के लिए कि चांस था लेकिन ऐसी बॉल बैकवर्ड पॉइंट की फील्ड और मस गली के फील्ड ऐसी उनसे मिस्टेक हुई जरूर थी, अपने आप को रेक्टिफाई करना चाहेंगे यहां अंकित, बिकॉज यू नीड टू करेक्ट योर सेल्फ इमीडिएटली। अगर आपने अपने आप को सुधारा नहीं तो भाई काम खराब हो सकता है। चौका मिला है, फर्स्ट बाउंड्री ऑफ चैलेंजर्स फाइनल। स्कोर हुआ है 5, विकेट गए हैं 1। अंकित धाम पर सभी की निगाहें, बिकॉज अंकित हैड लुक एट दैट हिट, क्रिस्टल क्लियर हिट, ठोक डाला 4 रन, बैक टू बैक चौका। 1 अंकित धाम पर सभी की निगाहें, बिकॉज अंकित हैड look at that hit, crystal clear hit, ठोक डाला।
विशाल मेरवाना कैप्टन आ चुके हैं लेफ्ट आर्म बॉलर और टीजे hits it through the covers for a timeful चौका 4. विशाल मेरवाना कैप्टन आ चुके हैं लेफ्ट आर्म बॉलर और टीजे ये सो हमारे साथ जुड़े हैं मेरे को कमेंटेटर फिरोज आ चुके हैं हमारे साथ कॉमबॉक्स में. वेलकम फिरोज, स्वागत है आपका. Thank you so much, brother. It's been a pleasure to join this team in this particular tournament, which we are watching live in Lonavala at this particular moment. It's a beautiful ground, which is the SPJ ground. Now, you have Praveen Thambe Cricket Academy as well, which has been started recently here. Now, we're watching a great match that is happening in the evening. Such a beautiful place to watch and play as well. So, we are awaiting for some cracking knocks that we will surely be watching in this particular match. We've already seen a good start being given by both the openers. Look at that delivery. Look at that delivery. What a delivery that is from Vishal. Quicker one. The batsman was surprised. Beautiful delivery. Right in the block hole it was. GT is playing on 13 at the moment. 2.3 overs done. Last 3 deliveries left of the third over. They have a great squad. Team GT have a great squad. They have some great batsmen coming up as well. But now is the time for Tarun and Ankit to set up a good partnership for the team. Look at that. Look at that. And the appeal worked. And wicket number 2 falls and back in the pavilion. For Tarun and Ankit to set up a good partnership for the team. Look at that. Look. So the Pink Panthers are leading from front at this particular moment. 2 pavilions back, 2 batsmen back in the pavilion at this particular moment. What a start for them. An ideal start in the finals. Abhimanyu is the new batsman who just stepped in to join in Ankit. He would be facing the first delivery now. A beautiful delivery, a drive that's been done goes straight toward the point fielder. A dot delivery to begin. I just said before this delivery that they need to set up a good partnership for the team. But the way these deliveries being bowled by Vishal is making very difficult for any of the batsmen to step in and makes runs in them. So we are done with the third over as well. 3 overs completed, 13 on board for the loss of 2 wickets. Dhiren Dadia. Dhiren Dadia
फर्स्ट बॉल इज बीन पनिश, दैट्स अ ह्यूज वन. ये लगता हुआ अंकित धाम का ब्रांडेड स्टाइल सिक्सर. क्या शुरुआत है. दिस इज कॉल्ड द स्टार्ट which we were expecting from Ankit Dham. ये स्टार्ट की जरूरत थी. देविक इज नॉट. फर्स्ट बॉल इज बीन पनिश, दैट्स अ ह्यूज. सबसे बड़ा फैन है देविक. ही इज नॉट हैप्पी यार, बिकॉज पावर प्ले में ना, पावर प्ले में अपनी पावर को दिखाना बहुत जरूरी है. धनंजय के नाम में ही पावर है. और मजा आ रहा है जिस तरह से अंकित ना फ्लॉलेस और फियरलेस खेल रहे. ये बात इनके लिए सही है, बिकॉज स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग के पूरे हिस्ट्री में अगर देखे जाए तो ही इज द वन हु हैज स्कोर्ड अ फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी. तो बॉस अंकित धाम चैलेंजर्स फाइनल का ये मोमेंट इनके लिए लिखा जाना तय है, अगर यहां वो अच्छा खेलते हैं तो. इफ बट अगर मगर ये अपने लाइफ की या स्पोर्ट्स के बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है. धीरेन डेडिया, वाह देखिए धीरेन डेडिया इज अ वेरी चालाक बॉलर. ओ बड़ी मेहनत हो रही है, बड़ी मेहनत हो रही है और बॉल को रोका जाएगा. रिकेन सबसे यंग है इस टीम में और बहुत दौड़ना पड़ रहा है रिकेन को. थोड़ी सी इंजरी से जूझ रहे हैं रिकेन. हमारे केजी केयूर भाई सारे प्लेयर्स इंजरी से बिल्कुल जूझते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए उनका कमिटमेंट सॉलिड है बॉस. स्कोर इज एट 21 for 2, 21 पर 2. हालातें जो बहुत खराब दिख रही थी गोल्डन टाइगर्स के लिए, वो 3 चौके और सिक्सेस ने हालातों को सुधारा है. इंप्रूवमेंट इज मच नेसेसरी, चाहे आप क्रिकेट में हो या अपने पर्सनल लाइफ में. ओ दैट वाज अ क्विकर वन ऑन टू द लेग्स. मिस कर दिया. अंकित धाम इज नाराज. क्यों नाराज है? बिकॉज ऐसे बॉल को अगर फाइन खेलते ना तो 4 मिल जाता. सौरभ, क्रिकेट की ये टेक्निकलिटीज बहुत जरूरी है ना, चांस लोगे तो काम बनेगा. स्कोर रिमेन्स एट 21, 21 रनों पर स्कोर बना हुआ है. हमारे सभी मैच ऑफिशियल्स का मैं दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ. मुंबई जोन में जितने हमारे मैच ऑफिशियल्स हमारे साथ बने हुए थे, आज पुणे के इस खूबसूरत सरजमी पर एसपीजे लोनावला के इस बहुत ही आकर्षक ग्राउंड पर खेला जा रहा है चैलेंजर्स फाइनल. धीरेन अभी फील्ड प्लेसमेंट चेंज हुई है, गैप में बॉल चली गई है बैकवर्ड डीप स्क्वायर लेग रीजन पर. यह मिलता हुआ 4 रन अंकित धाम के लिए. With that 21 सिल्वर जुबली हो चुकी है चैलेंजर्स फाइनल. 25 लुक एट दैट शॉट अगेन. इस बार कोई मिस्टेक नहीं अंकित से. पावर प्ले में बहुत अच्छा फायदा ले रहे हैं अंकित. स्कोर इज रेसिंग अप टुवर्ड्स 25. सौरभ अक्सर हर वीकेंड को इसी ग्राउंड पर रहते हैं. सौरभ आज क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? अच्छा है या बहुत अच्छा है? बढ़िया है ना. अच्छा ना बहुत अच्छा, बढ़िया है. कैच का चांस नहीं. ओएमजी, चौका. लाइफलाइन के साथ चौका भी मिलेगा. टफ वन. चलिए लकी चौका मिलता हुआ यहां गोल्डन टाइगर्स को. देखिए चांस था, देयर वाज अ चांस देयर, देयर वाज अ चांस देयर. ही डिड इट वेल. ऑल्दो अगर सनी पकड़ लेते ना ये कैच तो दिस वुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट. 29 रन्स at the end of the over, 29 for 2. सो 4 ओवर खत्म हो चुके हैं और फिर उस 4 ओवर में ना पहले ही ओवर में मेडन ओवर से शुरुआत हुई. मित्तल जोशी ने मेडन ओवर के साथ शुरुआत की. इसके बाद धीरेन डेडिया आए. धीरेन डेडिया ने विकेट्स ली. उसके बाद रिकवरी हुई है अंकित धाम से एंड टीजे से. दोनों ही बैटर्स ने अपने नाम पर बाउंड्रीज अपना ली है. लेकिन लेट्स सी अभी कैसे गेम आगे बढ़ता है. अब आने वाले जो 6 ओवर होंगे वो होंगे पेविलियन एंड से.
ये सिनेरियो है स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग का, 4 ओवर एक एंड से, 6 ओवर दूसरे एंड से, एंड अगेन वाइस वर्सा, सो दैट ना दोनों ही टीम को एडवांटेज सेम बराबरी का मिलेगा। सो अभी बॉलिंग करने के लिए आएंगे कैप्टन विशाल मेरवाना। फिरोज, कैसा रहेगा आने वाला खेल? मैं सबसे पहले आपको तो ये बताना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि अंकित और अभिमन्यु कितने बड़े प्लेयर्स रह चुके हैं अपनी टीम के लिए। इतना बड़ा मुकाबला, बड़े प्लेयर्स को एक अच्छा मौका है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का। कैप्टन आते हुए वेट एंड जॉय एंड से विद अ लेफ्ट आर्म, he knows how important it is for him to bring in a wicket at this particular time, because you know that how big does Ankit believes in hitting. He usually deals in maximums and boundaries because he knows that that is how he should be playing in this particular match. One last performance is needed in this particular tournament to lift that particular trophy. They are playing very smart at the moment. The previous over they got some good knocks, a maximum on the first delivery, straight right above both the fielders at the long off and long on. There was no chance for that maximum to be stopped. They want to build up a good partnership for the team at this particular moment. Share every single over, rotate, strike, get some boundaries in between. A flighted delivery there, goes straight toward the fielder standing inside the circle. So no run there, another dot delivery. A good start being given by the captain. He knows the right areas to be bowled to every single batsman because they have been playing since years and years together. And look at that connect, goes straight. Hit hard, goes straight toward the fielder at the long on. Single being taken, strike being rotated. Last couple of deliveries left in this over. Ankit back on strike. Playing on good 25 at the moment for the team. Flighted delivery again. So this is very smart from the captain. He knows that these kind of deliveries would give a chance for bringing in a wicket. The field setup that's been done by the captain is exactly as per his bowling. A quicker one there, smartly being played, but goes straight toward the fielder at the third man standing inside the circle. So we come to the end of over number 5. So 5 overs done, 32 on board for the loss of 2 wickets. पांच ओवर की समाप्ति हो चुकी है अभिजीत। फिलहाल जो एक ओवर अभी कप्तान ने लाया था, काफी बढ़िया ओवर था अभिजीत। अब एक और ओवर आता हुआ वेट एंड जॉय की एंड से। इस एंड से अगर आप देखोगे तो बाउंस बहुत कम मिलता है, और ये वाला जो एंड है ये इसकी एक हिस्ट्री रही है इस ग्राउंड पर कि अनइवन राइज यहीं पर मिलता है। अगर कैप्टन इस एंड से एक भी फास्ट बॉलर फिलहाल एक ओवर अगर देते हैं किसी फास्ट बॉलर को, तो क्या लगता है क्या वो मोमेंटम चेंज कर पाएगा? यस सर, आपका प्रेडिक्शन एज ऑलवेज बेहतर ही होता है बिकॉज यू नो प्रीटी मच वेल इस विकेट के हर एक बारीक बारीक तिनके को, इन हवाओं को आप बेहतर जानते हैं। सो आपका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो ही नहीं सकता। कैप्टन अगर यहाँ पर फास्ट बॉलर आता है तो एडवांटेज मिलेगा जैसे आपने कहा, बट अभी एंडी ही इज अ वेरी चतुर बॉलर। देखते विकेट लेने में माहिर जरूर है एंडी। फास्ट बॉलर को आई थिंक सो अभी बुलाया नहीं जाएगा बिकॉज स्पिनर्स की स्ट्रेंथ इस टीम में ज़्यादा है, फास्ट बॉलर्स कम है। आज एक एब्सेंस है प्लेयर
गुरुनाथ गवली जो मिड आर्म पेस बॉलर है, धीरेन डेडिया, मित्तल जोशी एंड गुरुनाथ गवली, ये 3 पेस बॉलर्स है स्क्वाड में। सो स्पिनर्स का आपको बढ़ता प्रभाव नजर आएगा। सिंगल से अंकित दाम एंड टीजे स्ट्राइक रोटेट करने की जो पॉलिसी है वो अपना रहा है, विच इज वेरी गुड। ये बहुत जरूरी है बिकॉज हमारे स्कोरर सौरभ को बिजी रखना है, ये पॉलिसी अपनाते रहनी होगी। दिस इज अ वाइड बॉल। और हम जानते हैं कि 2020 क्रिकेट के अंदर स्पिनर्स का कितना प्रभाव रहा है। लाइक एन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमने देखा है कि केकेआर की टीम ने जितनी भी ट्रॉफी आज तक जीती है उसमें काफी प्रभाव रहा है स्पिनर्स का। एक फुल टॉस आती हुई हवा में गई गेंद, जाएगी सीधा उस रोप के पार, आसमान से छूती हुई ये निकली गगनचुंबी सिक्सर। अंकित दाम को फुल टॉस करना पाप है, पाप। 21वीं सदी में आप ऐसे बैटर को फुल टॉस नहीं कर सकते, इट्स अ क्राइम। एंडी ने चांस लिया था। कॉम्बॉक्स के बाहर से मुझे बोले थोड़ा सा धीरे बोलो सर, हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। फिरोज और मेरी आवाज, फिरोज की आवाज को तो यहाँ पे कोई नहीं दबा सकता बॉस। और एंडी ने मेरे ख्याल से कोशिश जरूर इस चीज की थी कि वो चाहते थे कि एक फ्लाइटेड डिलीवरी जाए, लेकिन वो फ्लाइटेड की जगह फुल टॉस चले गए। और ये बल्लेबाज ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ता है। और फिलहाल एक बड़ा मौका इस फाइनल में परफॉर्म करने का, जहां पर एक बढ़िया सा पिच मिला है। सो क्यों ना कुछ अच्छे रन अपनी टीम के लिए मारे जाए। ये देखिए एक बढ़िया कमबैक कहा जाएगा, एक फुल टॉस के बाद एक बढ़िया सी गेंद, डॉट डिलीवरी। लेकिन जिस तरह से दोनों बल्लेबाज फिलहाल खेल रहे हैं, इट्स वेरी स्मार्ट, वेरी टेक्निकल दे आर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट फॉर द टीम, बिकॉज दे नो इट how important it is for them to build up a partnership for the team, because they have already lost 2 wickets in the power play itself. It was a wide delivery being given by the umpire. Another quicker one and a shot that's been played towards the covers here that the field is standing in the deep. They will settle only for 1 run, and that is smart cricket, that is sensible cricket. You know that at this particular moment you need to be there for a longer time. They have enough overs. They have lost 2 wickets already. So Abhijit, I don't think so that there's a need for any of the batsmen to take any kind of a risk at this particular moment, because you see a lot of runs have come in this over, an expensive over I would say. यस, एक्सपेंसिव ओवर। देखिए वो जो बॉल थी ना, लो फुल टॉस वाली बॉल, वो थोड़ा सा मिस जजमेंट हुई थी एंडी से, एंड एडवांटेज तो बैटिंग टीम ने ऑलरेडी ले लिया है इस ओवर में। ये ओवर को और बड़ी करने की कोशिश करेंगे टीजे। छोटी बॉल उतनी बेहतर तरीके से, एलिगेंट तरीके से इस बॉल को पुश किया है टुवर्ड्स डीप कवर्स फॉर सिंगल। इसी सिंगल के साथ स्कोर हुआ है 42, 42 रन, 44 रन, 44, 44 रन, करेक्शन देयर, 44 रन्स 6 ओवर की समाप्ति पर। देखिए टीजे आउट है अभिमन्यु। आई एम सो सॉरी सौरभ, मुझे करेक्ट करे यार, टीजे आउट हो के जमाना हो गया सर, क्या कर रहे हो। अभिमन्यु 4 रन बना चुके हैं 44 पर 2, 6 के बाद। उस वो बात ऐसी है धनु, हम यहाँ वहां भटकने चले गए तो भाई गड़बड़ हो गई बड़ी। टीजे आउट होकर लौट गए और बॉलिंग के लिए आ रहे हैं कपिल खिरानी। कपिल जो डीप कवर्स पर थे उनको अब बॉलिंग के लिए बुलाया गया है। इस सीजन में ना कपिल बहुत अच्छे दिखे। इनकी जो दूसरा है ना, यानी कि दूसरा बॉल डालने की जो आदत है वो बहुत शानदार दिखी है। सो डीप मिड विकेट पर खेला गया है। अभिमन्यु काक के द्वारा सिंगल आता हुआ। अभिमन्यु इज अ वेरी मैच्योर क्रिकेटर जो हमेशा से ही स्ट्राइक तो बहुत अच्छा रोटेट करते ही हैं, साथ ही साथ गेम चलाना जानते हैं। ये बहुत क्रूशियल रहता है किसी भी मोमेंट पर। सो अभिमन्यु ने स्कोर को अब पहुंचाया है 45 यानी कि 45 रनों पर। They are aware how good these batsmen are. The captain knows it very well, how important it is for them to break this partnership, because if these guys keep on going till 12th or 14th over, they would surely have a total of at least 180 plus on board. That's why they need to break this partnership at this particular moment. A helmet being passed on.
because the spinners are on at this particular moment. That's why Abhimanyu decides to wear a cap and play freely. A bowling change that's been done by the captain. We would have to see if that is going to work at all for the captain at this particular moment. Ankit is playing on 32. A good delivery there. Very good delivery being played very smartly. Respected on the back foot. It's a beautiful delivery. Pitching in the right area. Not letting the batsman to take any chance there. Beautiful seam position that he's got. And the way Kapil is bowling at this particular moment, if you look at his action, it's very calm. The way he runs towards the pitch, the way he delivers, he's got a high arm action that will have a good support for him to bring in some good overs in between for the captain. Abhimanyu on strike now. Quick run for him. Beautiful delivery there. Bit of a rise that he's got on that delivery. A dot delivery there. 4 good deliveries that we have seen in this over till now. Just 2 runs being scored. 5th delivery coming in to Abhimanyu. Another good delivery, a striking being done way above the head of everybody, and it has gone all the way for a maximum. How good that connect was. Look at that, a flighted delivery. Abhimanyu was awaiting for that kind of a delivery, and it has been pitched to him, and it goes above the head of the umpire for a maximum. Last delivery coming in from Kapil. Short pitch delivery there, being smacked towards the point area, falling short in front of the point fielder. So it's a dot delivery to end the over. So we are done with over number 8, 52 on board for the loss of 2 wickets. अभिजीत फिलहाल अभिमन्यु और अंकित वेल सेटल लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल स्कोर जो है बोर्ड पर अभी भी कंट्रोल में. जिस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस दिखाया है पिंक पैंथर्स ने, एक कंट्रोल बॉलिंग रही है, क्योंकि हमने इसके पहले का ओवर देखा जिसमें लेकिन एक मैक्सिमम जरूर लगा, लेकिन बाकी जितनी भी डिलीवरीज रही कपिल द्वारा सारी बेहतरीन डिलीवरी. मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूं कि कैप्टन एक और ओवर उनको थमाएंगे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने 2 डिलीवरीज कट की थी अभिमन्यु को, वो उस डिलीवरीज को समझ भी नहीं पाए, और जिस डिलीवरी पर मैक्सिमम लगा था, और ये देखिए मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, और पार्टनरशिप टूटती हुई. यार मैं आपको कहने जा रहा था फिरोज यार, रिकेन परमार इज अ विकेट टेकिंग बॉलर, और वो आते ही आ गए और भाई गुरु छा गए. दूसरी बॉल पर गिल्लियां बिखेर दी. बड़ी विकेट आई है. अंकित दाम इज आउट. वरुण साबो इज द न्यू बैटर इन. धनंजय क्या बॉल था यार, वो मजा आ गया. आपने जो दूसरा बॉल जो कट करने वाली बॉल की थी ना कपिल खिरानी की, उनकी आदत रही है इस सीजन में ना, उन्होंने अपने आप को इंप्रूव किया. वो जो बॉल है वो दूसरा कर, ही इज अ जेन्युइन ऑफ स्पिन बॉलर, लेकिन जो अवे गोइंग टुवर्ड्स द राइट हैंडेड बैटर रहती है ना, वो दूसरा बॉल बहुत सॉलिड कर रहे हैं इस पूरे सीजन में, और वो बॉल पर कई सारे बैटर्स अपना विकेट गवा गए हैं. लेकिन आज कपिल ने शुरुआत अच्छी की, उसका एडवांटेज नतीजा रिकेन को मिला. Correct. दाम इज आउट. And you are right, Abhijit. And the way the deliveries have been bowled by all the spinners, they have been on the target. There has been a message that's been passed on by the captain to all the spinners and the bowlers as well, that what should be the target for them to have.
Boundaries and maximums will keep on coming in between because you are watching a 20-20 over game and you are tend to leak runs, but bringing in wickets in between, keeping on breaking the partnership will keep you in game. And you know how important that wicket was. That's why the captain was too happy when that wicket was being sent back in the pavilion. So big man Ankit Dham, who was all set, was playing in his 30s, being sent back in the pavilion. The new batsman Varun Saboo comes in to join in Abhimanyu. A wicket being brought in the first over itself by Riken on the second delivery of his over. 52 runs on board at this particular moment. The score looks in control. 7.2 overs done, which means 44 deliveries being faced till now and 52 on board at this particular moment. A bit of a field change that's been done, requested by the bowler. They have sent a deep cover for the new batsman. Quicker one there, straight on the stumps, but the umpire says he has overpitched. And that's a no ball, which means a free hit coming up for the new batsman. So he's got a free arm now. He should freely try to get and rotate a strike. Let's wait and watch what kind of a delivery this would be. A quicker one there, pull shot. No fielder standing there. A keeper goes and collects the ball. Just a single. But the umpire says it's a wide delivery. There was no connection with the bat, which means another 2 runs. And the free hit continues. Now Abhimanyu on strike for the free hit. And look at that. He wanted to strike it toward the leg side, but it's a good delivery. It was from the bat, but no run there. If this man keeps on striking, he can take you to a total of at least 180 or 200. Because this big man has played some great knocks in the past as well for the team. Smart cricket. Very smart cricket. It's a final game that you're watching between these two teams who have played against each other for a long, long time. They know it pretty well. They know what kind of bowling department that the Pink Panthers have. They would surely have a target of targeting some of the bowlers in between for sure. They cannot afford to lose any wicket from here now. And look at that. Is that a wicket? Is that a wicket? And the umpire says another one. Oh, 2 wickets. Two big wickets falling in this over. How crucial this over is. This is turning out to be a game-changing over for them. Pink Panthers leading from front at the moment. Two wickets in the previous over being brought in by the Ken. 56 on board at the moment. After 8 overs done. The big man has just stepped in. Viraj Gandhi is the new man who just stepped in to join in. Abhimanyu.
इस फिरोज यार देखते ही देखते बहुत सारी चीजें बदल रही है। सूरज ऊपर थे, अब वो नीचे आ गया। आई मीन टू से ढलने को है, क्योंकि समय हुआ है ठीक 5:05। और आपको बेहतर पता है कि यहाँ पे सनसेट का टाइमिंग, जो गोल्डन आवर का टाइमिंग है, वो शुरू हो गया है आई गेस। और लेकिन गोल्डन टाइम तो शुरू हुआ है पिंक पैंथर्स का, बिकॉज एक बड़ी विकेट आई है। वरुण साबो जैसे एक सेटल बैटर को पैविलियन का रास्ता नापना पड़ा है। अभिमन्यु काक वर्सेस कपिल खिरानी, थोड़ा सा परेशान किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट में कपिल ने अभिमन्यु को। अभिमन्यु ये उन बैटर्स में से है ना जो बॉल को सबसे पावरफुल हिट करते, केयूर गांधी, अभिमन्यु काक, ये दो बैटर्स हैं जिनको आज हम देखेंगे, जिनकी पावर हिटिंग, ऑफ कोर्स अंकित धाम, ये टॉप 5 में ऐसे बैटर्स हैं जो बॉल को ना बहुत कस के मारते हैं। दैट इज द रीजन ये हार्डेस्ट हिटर ऑफ द बॉल है, ये सारे प्लेयर्स जिनके नाम अब हमने बताए। देखिए दैट वाज गोइंग अवे टुवर्ड्स द राइट हैंडेड बैटर, सिंगल लिया, समझदारी दिखाई है अभिमन्यु ने। जानते हैं कि वो अभिमन्यु, इनका नेचुरल स्टाइल ऑफ क्रिकेट है कि फटाफट खेलना, हिट आउट एंड गेट आउट वाली पॉलिसी नहीं है, हिट आउट एंड कीप हिटिंग, मारते रहो। अब वीरू 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 यानी कि विराज टीम के प्राउड ओनर है, कैप्टन है सौरभ। आज अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया है बैटिंग ऑर्डर में। चैलेंजर फाइनल में वीरू की परफॉर्मेंस बहुत मैटर करेगी। इंडियन क्रिकेट में वीरू ये नाम तो भाई नवाब ऑफ नजफगढ़ ये है, ये नवाब है गोल्डन टाइगर्स के, बिकॉज कैप्टन, इनका अंदाज, इनका स्टाइल, इनका स्वैग सौरभ सबसे अलग, मजा आता है इनको देखते हुए। 57 फॉर 4, ये ओवर नंबर 9 चल रहा है। इसके बाद 10 ओवर होगा, उसके बाद बाय हाइड्रेशन ब्रेक, जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक, जहाँ पे सभी प्लेयर्स और हमारी जो ऑडियंसेस है आज एसपीजे ग्राउंड पर आए हैं, उन सबको जल स्पर्श का ये निर्मल पानी यानी कि अल्कलाइन वाटर है, ये पिलाया जाएगा थ्रू आउट द स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग सीजन 4। हमारे चिराग जोशी, चिराग भाई, चिगी भाई की ये जो कंपनी है, ये बहुत अच्छा सेवा का काम करे और बेहतर तरीके से जल स्पर्श, फील द पावर एवरी आवर, जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक होगा आफ्टर 10th ओवर। सो जरूर उसके पहले ये दोनों बैटर सुरक्षित रहना चाहेंगे अपने अपने विकेट पर। देखिए वीरू फटाफट खेलेंगे, रन्स जोड़ेंगे, अपनी टीम के लिए जितने किफायती रन्स है वो जोड़ते रहेंगे। और ये आया है 4। ये ना कमेंट्री बॉक्स है ना, वो अच्छे एंड पर है, हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत अच्छा खेला है। ये इतना फाइन नहीं था जो हमें यहाँ से दिखाई पड़ा था। फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी है नहीं, दैट इज द रीजन ये गेंद आसानी से पहुंच गई अपनी मंजिल पर। 61 रन्स आफ्टर 9 ओवर्स, 9 ओवर खत्म हो चुके फिरोज। 61 इज अ वेरी डिसेंट टोटल, बट विकेट जो है वो 4 गए हैं। करेक्ट। और मैं अभी आपको वही बताना चाह रहा था कि जिस तरह से विकेट गिरते रहे हैं हर एंड से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। और विराज, इन्होंने काफी बढ़िया इनिंग्स खेली है इन द पास्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पिच। आई हैव नोन हिम सिंस years and years. One of my very good friend, and I've seen him batting for a longer time for his team whenever it was needed, and now is the right time for him to build up a partnership with Abhimanyu, and that is what he would be targeting at this particular moment. Look at that, a great delivery, connected well but goes straight towards the bowler. Low full toss, there was an appeal, but the umpire says not out. Still the appeal is going on from the keeper. That was a good take by the keeper. Brilliant delivery. That was a quicker one to surprise Abhimanyu. A short pitch delivery there. Quick run being requested. Viraj responded well and completes that. We have known Viraj playing some great knocks for the team. We would have to wait and watch what kind of a plan that he has at this particular moment, because he's come too early on the pitch. 9th over done. Last over coming in to complete over number 10. A quicker one there again. Smart cricket. If you keep on rotating the strike, it will always keep you in the game.
and you'll have something happening as a positive thing that keeps on your scorecard ticking, and that's the right thing. Short pitch delivery there, could not had the right control on that particular delivery. A single being taken there. Flattered delivery played toward the leg side by Viraj. And a single being taken there. So 10 overs have been completed on board, 65 on board for the loss of 4 wickets. We will have a quick drinks break now. यस वेलकम बैक आफ्टर जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक. देखिए जल स्पर्श फिरोज कैंगिन वाटर है जो 6x मोर हाइड्रेटिंग है, जिसके बेनिफिट्स आप सभी को मैं पूरे 6 दिन बताते आ रहा हूँ. आज भी मैं बताऊंगा. चिराग भाई जोशी हमारे इनकी ये टीम है, इनकी ये जो कंपनी है जल स्पर्श, जो कि एक बहुत नेक काम कर रही है. और ये हेल्दी एज तेजी के साथ दौड़ रहा है. यहाँ की आउटफील्ड बहुत क्विक है और इसी के साथ लगा ड्रिंक्स ब्रेक के बाद चौके की शुरुआत होती हुई. देखिए फिरोज भाई हाइड्रेटिंग वाटर है ये, जो जिसके बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर से एक बार कि इट हैज़ अ हेल्दी एंड क्लियर स्किन, ओवरऑल वेलबींग, बूस्ट एनर्जी, प्रिवेंट्स हेडेक, बूस्ट किडनी फंक्शंस, रिमूव्स टॉक्सिन, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोल्ड एंड फ्लू. मिशेल पारेख इनकी अगली गेंद और बड़ी हिट. वीरू गांधी फील्डर जरूर है वहां डीप स्क्वायर लेग रीजन पर, कपिल खिरानी, लेकिन एक ही रन मिलेगा. और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें
पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जल स्पर्श का ये पानी. थैंक यू सो मच चिराग भाई, हमारे प्राउड जल स्पर्श हमारे हाइड्रेशन पार्टनर है. हमारे सभी ब्रॉडकास्टर्स थोड़ा अपने आप को भी हाइड्रेट करा रहे हैं. धनु, फिरोज, सौरभ, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, नहीं तो फिर भाई हालत ख़राब हो जाती है. और वो चौका आया ना, चौके के साथ एक बड़ा मौका भी आया है गोल्डन टाइगर्स के लिए. ये हाइड्रेशन ब्रेक के साथ साथ स्ट्रैटेजिक ब्रेक भी होता है दोनों टीम्स के लिए कि यार अब आने वाले 10 ओवर कैसे खेले जाएंगे. अब क्लियर है कि स्पिन अटैक ही चलता रहेगा पिंक पैंथर्स के लिए. देखना होगा कि अभिमन्यु काक और वीरू किस तरह से इनको नेगोशिएट करते हैं. फिलहाल मिड पेस बॉलर मिशेल पारेख टीम के प्राउड ओनर है. देखना पड़ेगा अंपायर का निर्णय. चौका है, 4 रन मिलेंगे. 4+1 5 का फायदा, 5 रन. फ्री वाले 5 रन ऑलवेज एक्सेप्ट करो. हम इंडियन से हमको फ्री सब कुछ अच्छा लगता है धनु, राइट. किसके ऊपर क्या फ्री है ले लो. हर बार फ्री वाली चीजें अच्छी होती है या नहीं ये हमें नहीं पता. 75 विद दैट 5 रन. बहुत अच्छा शुरुआत मिला है आफ्टर हाइड्रेशन ब्रेक और चाहेंगे ज़रूर गोल्डन टाइगर्स कि इस एडवांटेज को बरकरार रखेगा. देखिए बैटिंग ऑर्डर बहुत स्ट्रांग है. इसके बाद भव्य, प्रशांत, केडी, ये सारे अच्छे बैटर्स लाइनअप है. मार्क, नॉट टू फॉरगेट, कपिल मकवाना, पेरी, ये सारे स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर्स अभी भी मौजूद है. लेकिन फिलहाल अभिमन्यु कांक इनके ऊपर निगाहें होंगी. The intention is very clear at this particular moment, Abhijit. They are looking to find boundaries, and the way they have started this over is absolutely wonderful. They have got 2 boundaries already, 5 runs on that particular wide delivery that was been bowled, and both the batsmen are eager to look out for boundaries now. The intention has been all set. The captain needs to have the right thinking to which bowler to bring in at this particular moment. If they are planning to bring in any spinners at this particular moment, maybe I would suggest that he should be holding on for a couple of overs more. Viraj there, Abhimanyu there. Both the great strikers for the team Golden. They are looking out 4 runs on every single delivery. 14 runs already in this over. 2 more deliveries to go. Are we expecting any other boundary or a maximum? And look at that. As I said, we get another boundary in this over. Perfect connection, perfect deliveries that the batsman is expecting. It was a 2 short pitch and a loose delivery. It was too loose. The batsman had enough chance to play a shot above the fine leg field, and it goes all the way for a 1 bounce boundary. Now the last delivery of the over coming in. यार ये शॉट ऐसा खेला है ना कि बॉल ढूंढने के लिए 10-10 लोग खड़े हैं, कहाँ गई है बॉल. लेकिन फिलहाल ये मोमेंट है जीटी के लिए. एंड अभिमन्यु कांक, वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर ऑफ दिस सीजन, एक अच्छे होस्ट भी है. इज अ वेरी पॉपुलर होस्ट एज वेल. मुंबई में बहुत अच्छा नाम है इनका अभिमन्यु. मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है. क्रिकेट तो अच्छा खेलते ही हैं और उनकी होस्टिंग हमने ऑक्शंस के वक्त देखी थी, महसूस की थी. सो मज़ा आ रहा है जिस तरह से अभिमन्यु गेम को एक्सेल कर रहे हैं, अपने कंट्रोल में रख रहे हैं. एंड नाउ द स्कोर इज लुकिंग एट 180. वो दिख रहा है दूर दूर तक. Look at that connect. No chance for anybody to move. And over with 22 runs comes to an end. 22 in that over from Michelle. 11 overs done. 87 on board for the loss of 4 wickets. Well, the message is all clear. Right after that drinks break, the intention looks pretty clear. 22 right after that drinks break. I think the water has worked for them. They look all hydrated. 87 on board now. 4 wickets down. Viraj and Abhimanyu looks all set now. They must be surely targeting
a total of at least 160 to 70 at this particular moment, because having a total of 150 plus is always a good total on this particular ground, because we have seen some low scoring matches as well, which has come too close. Now is the time. Now Nirav coming in from the mountains end. Starting his over with a quicker one. Viraj on strike. The way Viraj is moving at this particular moment, I'm sure he's looking at to bring in his first maximum, because he's known for it. He knows this ground. He's played enough matches here. He knows this pitch. He knows how the air rotates on this particular ground and which is the quickest area on this particular ground. And surely he would be targeting that. Abhimanyu comes back on strike. A flighted delivery there. Beautiful delivery there. Dot delivery after a long time. 88 on board. We've seen a good over just before this. 22 being scored. 1 run being scored in the last 3 deliveries. Another flighted delivery. Look at that delivery. Unplayable. That was enough rise that he got. Another dot delivery. Last 2 deliveries coming in this over. Another good delivery. Viraj was interested in taking a run there, but Abhimanyu says no. Last delivery of this beautiful over. Is Abhimanyu planning something to strike on this delivery? He did try, but unsuccessful. What a good comeback. This man with a golden arm bowled a beautiful over just to run in this over. So with that single, the scorecard moves to 88 on board after 12 overs done, with 4 wickets down for the team. Golden. फिलहाल इस ओवर का टारगेट जरूर रख बहुत ही बढ़िया ओवर था केवल आए उसमें 1 रन. You can see the intention very clear from Viraj. He's going right outside the crease and want to strike some great knockings in this particular over. They would be surely trying to hit those deliveries above the head of the fielder standing right inside the circle at the covers. So let's wait and watch what kind of over this would be. The ball stayed low. The ball stayed low. You would not get bounce from this end. And the batsman have to be very smart when he's playing from this end, because we have seen in the past as well, I have played on this particular pitch as well, Abhijit, and I have seen that from this particular end, always it's an uneven bounce, and most of the deliveries that would be staying, that would stay low. Even if the bowler is trying to get some bounces, it would be very difficult for any bowler to get bounces from this particular end. And he tries that. The ball being pitched outside the off stump, and the umpire says another 1 delivery. So 2 extras being scored in this over already. Viraj is checking the entire field setup that's been done by the captain of Pink Panthers. He's planning to get some gaps. Cover fielder being moved a bit. He's been moved a bit finer now. Viraj goes in deep.
Getting it held the edge. Is there a fielder coming under it? And that's an easy drop catch. Oh, is it going to change any kind of a momentum? It's a big wicket. You cannot afford to lose such kind of drop catches in a big match, in a final. That's Viraj. You can't afford to lose wickets at this particular moment. You guys are all set now. You need to build up a good partnership. Total on board. Viraj gets alive. Will he be able to make a count? We would have to wait and watch. That time would say all that. Abhimanyu strikes. Fielder standing there, falling short. Just a run being scored. A single being taken. Strike being rotated. Viraj comes back on strike now. The good thing that happens when you rotate the strike is when you go back on the other side of the pitch, you have enough time to think that what you can plan on the next delivery. And you have enough chances as well to get some good runs for the team. It's a quicker one. And a beautiful delivery that would be to Viraj. We've seen some boundaries coming in the 11th over, and after that we have not seen a single boundary being scored. Abhijit, what do you have to say at this particular moment? What are they targeting? देखिए फिरोज, यहाँ एक जो विकेट मोमेंट बना ज़रूर था धीरेन के, लेकिन धीरेन की मिस्टेक थी. अपनी बॉलिंग पर ऐसे कैचेस आप बिलीव नहीं कर पाए, कोई छोड़ता है नहीं, बट ये मिस जजमेंट हुई थी. और हाई कैचेस आर नॉट वेरी इजी कैचेस टू बी कंप्लीटेड. लेकिन धीरेन से हम एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज धीरेन ने ना कुछ बहुत हैरत अंगेज कैचेस लिए थ्रू आउट द टूर्नामेंट. और वीरू का विकेट यानी कि आपने 20-25 रन अपने टीम के लिए समझ लीजिएगा कम कर ही दिए थे. लेकिन आप देखते हैं वीरू, विल ही प्ले फियरलेस? यस, ही विल प्ले अकॉर्डिंग टू हिज नेचुरल क्रिकेट. वो अपने स्वाभाविक खेल को ही दर्शाएंगे, चाहे उन्होंने कैच दिया था या नहीं, वो बात को ध्यान में रखेंगे नहीं. एंड ऑफ ओवर नंबर 13, 93 for 4. So we have with us Kiyansh Mehta, na, right? Kiyansh Jitin Mehta. Bulibhai's son is with us in the com box, and he's saying, yeah, Pink Panthers are playing well, right? Yes, they're on their. Now Viraj is on strike at this particular moment. He's looking out to get some boundaries and maximums for the team. Beautiful deliveries. The pitching that is happening from this particular bowler are absolutely wonderful to watch from this particular side. Now we are sitting at the commentary box, and if you look at the screen, the deliveries that have been pitched by this bowler are absolutely wonderful. No chance for anyone to connect or bring in some boundaries on those kind of deliveries. Rotating the strike is the right thing. In the 11th over, we had seen some boundaries coming in. And after that, no boundaries being scored. Abhimanyu comes back on strike. Getting the edge. Ball going straight toward the fielder. A dot delivery there. I think at this particular moment, Abhijit, they can play fearless because they have some great batsmen sitting at this particular moment in the pavilion. We have seen some great knocks that we have been played, and look at that connect. I was just saying that boundaries are required for them to bring up a good total on board because Pink Panthers have some great batting lineup as well.
and they cannot afford to leak runs at this particular moment. But these two guys, Viraj and Abhimanyu, are unstoppable. If they keep on going, you cannot stop them at all. They still have Prashant Jethmalani. You know this guy, that he has played some great knocks in his innings that he has played in Mumbai in this particular tournament. He's played some great knocks and he's an all-rounder. He's a bowler as well who gets some great wickets for your team. To have such kind of players in your team makes your team look stronger and stronger. Now the field change being done. They're bringing in another fielder there. यस फिरोज, यहाँ बहुत क्रूशियल है जिस तरह से अभिमन्यु अपने बैटिंग अंदाज को दिखा रहे हैं. आई थिंक ही इज ऑफ विद अ फ्लाइंग स्टार्ट. अब भी उन्होंने 100 का स्ट्राइक रेट है, 31 बॉल्स 32 रन. वेरी वेरी अनयूजुअल नॉक है, बिकॉज अभिमन्यु अगर 30 बॉल्स खेलते हैं ना तो वो एटलीस्ट 45 प्लस रन बनाते हैं. उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 150 के आसपास रहा है थ्रू आउट द टूर्नामेंट. बट ग्रैंड फाइनल्स है, मोमेंट और सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलने वाला प्लेयर ही टॉप क्लास प्लेयर बनता है. अभिमन्यु ने वो झलकियां दिखाई है इस मैच में, एंड जीटी के लिए ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट. ये अगर बने रहेंगे और 2-3 ओवर तो स्कोर 180 नहीं 200 तक जा सकता है. And I agree with you, Abhijit. What you said, I really agree with you. And you know that these two guys have played some great knocks. And look at that. Getting in healthy age, racing toward the third man. Would they be settling for one? No. And look at that. Great running between the wickets. They have taken two. They have converted a single into 2 runs, which is the right thing to do at this particular moment, because you have some great batsmen sitting in the pavilion. You need to make sure that they have 100 up. a good total. Oh yes, oh yes. How can we miss that? They have touched down a total of 100 runs on board. 14th over in progress. Last delivery coming in of over number 14. So they still have 37 deliveries in their hand. Will they be able to get 70 or 80 runs more, Abhijit? What do you have to say? At least 70 plus runs is what they need to look out for. Because agar Abhimanyu and Viru, if these two batters are still in the crease for a couple of more overs, तो यार ये फटाफट से ही रन जोड़ेंगे. एंडी इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर. इस ओवर में एंडी ने थोड़ा सा बांधे रखा है. सिनिक एसपीजे लोनावला के ग्राउंड पर फाइनल्स देखने का और खेलने का मजा सबसे अलग है. 101 इमरजेंसी नंबर रन्स आ गए हैं. 101 for 4 आफ्टर 14 ओवर्स. 14 के बाद 101 पर 4. बहुत अच्छा एक्टर है. विकेट कीपर्स सबसे अच्छा एक्टिंग करना जानते हैं, अपील करना जानते हैं. उनमें से एक है अंकुश ओबराय. स्टाइलिश भी है, अच्छे क्रिकेट स्किल्स है उनके पास. बैटिंग एंड विकेट कीपिंग स्किल्स इस पूरे सीजन में उनकी शानदार रही है. फिटेस्ट प्लेयर भी रहे हैं अंकुश ओबराय इस सीजन में.
मिस क्यों किया है। अभिमन्यु इज नॉट हैप्पी एट ऑल। वो जानते हैं इस बॉल पर एडवांटेज लेना चाहिए था लेकिन नहीं ले पाए। 2 डॉट बॉल्स इन अ रो। सौरभ हमारे साथ एज अ स्कोरर जुड़े हैं इस ग्रैंड फाइनल्स के लिए। सौरभ यहाँ महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के ज़्यादा मैचेस करते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेट मैचेस भी करते हैं। उनका आज यहाँ हमारे साथ बनना हमारे लिए भी उतनी फक्र की बात है। अलॉन्ग विद बोथ प्राउड मैच ऑफिशियल्स नीलेश धनकवड़े एंड किरण भोसले, अलॉन्ग विद माय को कमेंटेटर फिरोज, जो आज जुड़े हैं स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग सीजन 4.0 के ग्रैंड फाइनल्स में। बहुत शानदार ग्रैंड फाइनल से पहले का ये चैलेंजर फाइनल है जिसे देखने में मजा आ रहा है। 170 एवरेज या पार स्कोर है, इसको आर पार लेके जाएंगे अभिमन्यु काक, ये प्रिडिक्शन किया जा रहा है। लेट्स सी किस तरह से 170 प्लस का टारगेट दे पाएंगे गोल्डन टाइगर्स। वीरू अक्रॉस आए, वाइडिश लॉन्ग ऑन पर प्लेयर मौजूद है, सो वीरू को एक ही रन मिलेगा। विद दैट सिंगल स्कोर मूव्स अप टू 103 फॉर 4। वी आर इनटू 15th ओवर। इस ओवर की 2 गेंदें शेष हैं और तेजू ने बहुत अच्छी शुरुआत की। देखिए स्टार्ट जब हुआ मैच तो हमारे साथ कॉम्बॉक्स में तेजू जुड़े थे और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं और बहुत ही अच्छे इंसान भी हैं तेज दाभोलकर। आने वाली ये कुछ गेंदें हैं जहां अभिमन्यु वुड वांट कि यहां 1-2 बड़े हिट्स आ जाएं, तब जाकर एक एवरेज रन्स बनेगा। नहीं, दैट वाज अ क्विकर वन बाय तेजू कमिंग इन टुवर्ड्स राइट हैंडेड बैटर। डॉट गेंदे ये प्रेशर बढ़ाएंगी बैटर्स पर। लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर, 5 गेंदों पर अब तक तेजू ने सिर्फ 2 रन दिए, विच मींस मुंबई की लैंग्वेज में अगर बात करें, फिरोज अ वेरी कंजूस बॉलर। 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन, यार कौन देता है इतने महंगाई में। ये चाहिए, ऐसे बॉलर चाहिए अपने टीम में जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग रहे। कि हर मैच में इकोनॉमिकल बॉलर ऑफ द मैच को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है। अक्सर एथलीट्स को दिया जाता है दौड़ने के लिए, जंप करने के लिए, गोला फेंकने, भाला फेंकने के लिए, लेकिन अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग फेंकने के लिए भी स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग में इकोनॉमिकल बॉलर को मेडल मिलेगा। सौरभ आपको मिलेगा, मुझे मिलेगा नहीं, इकोनॉमिकल बॉलर को ही मिलेगा। ओवर खत्म, अच्छी ओवर रही है तेजू की। एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 15 स्कोर रिमेन्स एट 104 फॉर 4। And Viraj decides to come back and change the batsman. He knows how important it is for them to win this match. It's a big match for them. It's a big final. He decides to get retired hurt. Now they have 5 overs left. 30 deliveries in their hand. Someone needs to change the gear and bring in some boundaries. Because after 10th over, we had seen 11th over, which was being scored for 22 runs. Now, to be honest, it's the time for Abhimanyu to change the gear and bring in some runs for the team because he has played enough deliveries. He's been there since last 38 deliveries. So he has the entire understanding of this pitch and the bowlers in the department of the Pink Panther. So he needs to bring in some good runs for the team, which is ideally required. From here, they should be at least targeting to get 160 runs for the team. Having a total of 150 would be something very okay kind of a score on this particular pitch. But something that would take you above 160 is going to be a very good total to be defended on this particular ground. Because I'm sure by that time the sun would get settled, the lights would be on, it would be a different kind of an atmosphere for everybody to step in and play on this particular ground. Flighter delivery there, striking being done, right field setup being done by the captain. That's an absolutely wonderful understanding that the captain has. He knows that he should be having the right fielders in the right areas because he's understood all the batsmen and he knows that which kind of a area that any of the batter would love at this particular moment. Raj is the new batsman who stepped in to join in Abhimanyu.
Expectations are high from this man because they don't have any time. Raj doesn't have any time to get settled. He should keep on striking on every single delivery. And look at that. As I said, right field setup being done by the captain. 2 loose deliveries, but both of them being struck well. But that went straight toward the fielder standing in the deep. 2 singles on 2 deliveries. Abhimanyu on strike. Short pitch delivery. Goes straight towards the bowler. It's a drop catch. Oh, that was a quicker one. But a great work. Now is the time for Abhimanyu to shift his gear and bring in some boundaries and maximums for the team. Beautiful delivery, that is. Bit of a misfield. That will cost them a boundary, and look at that. That was supposed to be a single. And they have got a boundary there. A welcome boundary, I would say, that has come in after a long time. A shot that goes straight toward the same fielder. This time he does well. He saves a couple of runs for the team. But both the batters would be able to get a couple of runs to be added to the total. So 2 more runs to be added in this over. 8 of this over till now. Last delivery coming in of over number 16 from Riken. Abhimanyu playing on 44. Flighted delivery. Goes straight toward the fielder standing in the deep. A single being taken, strike being rotated. 16 overs done, 113 on board for the loss of 5 wickets. Firoz bhai, we were talking about 170 का स्कोर ना एट द एवरेज एट पार. यार ये तेजू एंड रिकेन ने आर पार कर दिया है. 113 रन्स, जस्ट 113 रन्स इन 16 ओवर्स. और अब बैटिंग पावर प्ले है हमारे स्कोरर सौरभ भाई. चील की तरह इनकी आंखें हैं भाई. भाई इंश्योर करा लो अपनी आंखों का अलग से बॉस. इनकी निगाहें तेज है, हमारी तरह नहीं 4-4 आंखें. 2 ही है बट सॉलिड है. थैंक यू सौरभ. बैटिंग पावर प्ले है मतलब अभिमन्यु को स्ट्राइक पर आना पड़ेगा और बॉलिंग खिलाएंगे एमजे मैजिकल जोशी. मित्तल जोशी इनका नाम आधार कार्ड वाला फिरोज. लेकिन ये स्पेल ऐसे ऐसे करते हैं ना, बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो. ही इज ऑलवेज अ शानदार परफॉर्मर. लेट्स सी पावर प्ले में ना दोनों एंड से पावरफुल क्रिकेटिंग स्किल्स हमें देखने मिलेगा. विद द बैट अभिमन्यु, विद द बॉल एमजे. तो ये जो लॉन्ग ऑन की तरफ आएंगे, मतलब मिड ऑफ पर आ रहे हैं इनफैक्ट जितिन, और लॉन्ग ऑन की तरफ यू भी रहेंगे. सो बॉय सीधे स्टंप्स पर है बॉल, ये तो पक्का है. स्टंप्स पर ही और फॉलो थ्रू पर देखिए. वाओ, पावर एनर्जी महसूस हो रही है कॉम बॉक्स में भी, बिकॉज एमजे ना मैजिकल है. जानते हैं अभिमन्यु उनको स्टेप आउट होकर या थोड़ी सी जगह बनाकर अक्रॉस खेलने की कोशिश करेंगे. ऑफ साइड के ये जो 3-4 फील्डर जो है ना, 4 फील्डर है, इनको बस इनफील्ड को बीट करना है. धीरेन लॉन्ग ऑफ पर मौजूद है. सो अधिकतर शॉट है ना वी जोन में खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी यहां अभिमन्यु को. स्लोवर वन और गेंद चली हवाई सैर करने के लिए ओवर द कैमरामैन सेट. इसी के साथ 50 रन पूरे अभिमन्यु के. क्या बात है. 50 इन जस्ट 45 बॉल, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्स और स्ट्राइक रेट 113 का. अभी भी थोड़े से गियर पकड़ लिया है जो हाईवे से अब आई थिंक है सीधे एक्सप्रेसवे पर. मित्तल जोशी ने पहला ओवर मेडन किया था, ग्रैंड आई मीन टू से चैलेंजर्स फाइनल का पहला ओवर मेडन किया था. आते ये पहले रन्स खर्च किए हैं एमजे ने. लेकिन भाई मजा आएगा अभिमन्यु और एमजे की ये बैटल देखने में. पहले 2 बॉल पर तो हावी नजर आए, इनफैक्ट पहले बॉल पर हावी नजर आए एमजे. दूसरे बॉल पर अभिमन्यु ने अपने बैट की चमक को दिखाया है.
Another striking that's been done. Oh, look at the work that's been done by the fielder standing in the deep. Great work being done to save a couple of runs for the team. It was a cracking shot that was being played by Abhimanyu. And a good work being done by the fielder in the deep. They would have to keep Abhimanyu back on strike. Back on strike. He had got a maximum just a couple of deliveries ago. Another short pitch delivery. Beautiful shot, unstoppable, and a boundary there. This is what we have been expecting from this man, because he has done this in the past many a times for the team, and he is doing it now as well. A boundary and a maximum being brought in, touching down the total of 121 on board. Last one delivery left in this over now. 19 deliveries still remaining in this inning. And a ball that goes straight toward the fielder. Falling short in front of Jitin. And a strike being rotated. So single to end the over. 17 overs done. 126 on board for the loss of 5 wickets. Vishal Mirvana, यानी कि there was no connection, the bat. So that is the reason अंकुश ओबरा है. ऐसे समय विकेट कीपर के लिए बहुत डिफिकल्ट रहता है. सो क्रूशियल है ये फेज जहां पर विशाल मेरो रिप्ले. और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि राज के पास टाइम नहीं था सेटल होने का, क्योंकि जिस वक्त वो आए थे उस वक्त केवल 4 ओवर बची थी और स्कोर काफी कम था. और जरूरत इस चीज की है कि उनको जितनी ज्यादा बाउंड्रीज मिले उतना उनके लिए बेनिफिट होगा. फिलहाल 160 का टोटल अगर इस ग्राउंड पे बन जाता है वो काफी डिफेंडिंग टोटल होगा, क्योंकि जिस तरह के गेंदबाज गोल्डन टीम के पास है, काफी बढ़िया गेंदबाज, और एक और करारा बल्लेबाज आता हुआ क्रीज पर, प्रशांत जेठमलानी. मैं इन्हें जानता हूं 2014 से और मैंने देखे हैं कुछ बढ़िया नॉक्स इनके बल्ले से. अब फिलहाल उनके पास डिफरेंट सिचुएशन, जहां पर केवल 15 गेंदें बची है और टीम को जरूरत है कुछ बड़े शॉट लगाने की और टोटल ले जाने की 150 के पार. गेंदबाजी का प्रदर्शन जो पिंक पैंथर्स ने किया है काबिले तारीफ. बेहतरीन प्रदर्शन. Every single bowler who has stepped in, they have made sure that they're bowling some great deliveries on the target as per the plan being given by the captain. Now Prashant, the left-handed striker, comes on strike. First delivery he faces, cracks towards the long off, and a great work being done by the fielder there. A brilliant stop there. A brilliant stop and a single being taken. "130 runs on board. 14 deliveries left. Abhimanyu on strike. Bit of a field change being requested by the captain. Is it going in the air?
It is, and a drop catch. Oh, how can he afford to drop catch of this big man who's playing some amazing shot for his team? That was an easy take. I think there was a bit of a miscommunication that happened between two fielders. But the good thing that happened, they did not collide. 2 more runs to be added. Change of pace. Smart thinking, smart cricket by the bowler. And the over comes to an end. So 18 overs have been completed. 133 runs on board for the loss of 6 wickets. So last 2 over of this inning, Abhimanyu and Prashant there. Abhimanyu have played a great knock for the team. He's playing on 61 at this particular moment. But this is not the end of this inning yet. He needs to keep on striking till the last over to take the team to a total of 150 or 60 plus. They's been brought in from Wet and Joy and held the edge, racing toward the fielder. He does a bit of a misfield there. Prashant denies for another run. Good call there. But it was a direct hit on the stump. Could have been tight. Single being taken. Strike being rotated. Prashant, the left-handed striker, comes on strike at this particular moment. 11 deliveries left. What are we expecting here from Prashant? Some great connection that would be happening. We would have to wait and watch. A left-arm spinner bowling to a left-handed batsman is a good contest to watch. Prashant goes deep in the crease. Delivery being pitched outside the off stump. The umpire says it's a wide delivery. 2 runs in the first delivery already. He strikes well, but goes straight toward the fielder in the deep at the long off. So this is what I have been saying. The field setup that's been done by the captain of Pink Panthers is absolutely wonderful. It was a loose delivery. A striking was being done too perfect, but goes straight toward the fielder. And single is something that any of the bowler or the captain would not mind. Shot by delivery this time. Unstoppable, no fielder there. Goes for a 1 bounce boundary. This is what they need. They need boundaries. 140 being touched down. 9 deliveries from here for both these batters. There was no fielder in the deep, no fielder standing at the fine leg as well. I'm sure that the batsman would want to go deep in the crease and strike toward the fine leg area where there are no fielders. It's a full toss. Is that a no ball? Does the umpire have to say no? Or the umpire says it's a legal delivery. And that has gone all the way for a maximum. Another full toss. This time not the right connection. A single being taken.
That was a Lowe's delivery as well. Field change. Prashant comes in. On strike, facing the last delivery of this over. 147 on board already. Prashant strikes, but should be able to get a single on the last delivery of the over. So 19 overs have been completed, 148 on board for the loss of 6 wickets. ये सो अच्छा ओवर रहा है पिछला ओवर टीम गोल्डन टाइगर्स के लिए। धनंजय, यहाँ हमारे सभी स्पॉन्सर्स को भी दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। देखिए अब आ रहे हैं प्रशांत जेठमलानी फिर से, बिकॉज केयूर गांधी आई थिंक सो ही विल गेट द चांस टू बैट फॉर द फाइनल ओवर। देखना पड़ेगा कि शायद उनको बैटिंग मिलेगी या नहीं, बट बिग थैंक यू टू ऑल आवर प्राउड स्पॉन्सर्स, गस कैप्स एंड एसेसरीज, गियर अप स्पोर्ट्स, एम पॉप एंड जल स्पर्श। थैंक यू सो मच टू all our partners for making this season a great success as well. So K comes into bat replacing Prashant Jetmalani. Final over है, final over में सौरभ 10, 15 या 20 देखते हैं कितने रन्स जोड़ पाते हैं। स्कोर अच्छा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। जो 170 की हम बात करते हैं उसके पास है। हाँ, एक समय पर लग रहा था कि 200 तक जाएगा। जिस तरह से अभिमन्यु बॉल को देखकर बॉल को इतना बेहतर मार रहे थे, लग रहा था कि यार 200 तक भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेजू रिकेन ने मिडिल ओवर्स में जो सही कारनामा किया है, दैट इज द रीजन यहां वो स्कोर 200 तक तो नहीं जाएगा। अब केयूर गांधी आएंगे नए बैटर। मित्तल जोशी फाइनल ओवर के लिए तैयार होंगे। पहले ओवर में मित्तल ने मेडन किया था, दूसरे ओवर में मित्तल भाई ने 13 रन खर्च किया। अब है लास्ट ओवर। Striking being done on the first delivery, but should be able to get just a single there. Last 5 deliveries in this over, the last over of the inning. Mr. Mittal coming in and bowling some brilliant deliveries from the Wetton Giant. A big man on strike. $149 आखिरी के 5 लीगल डिलीवरीज बची हैं ऑन स्ट्राइक के अभिमन्यु कांक, जिन्होंने इस मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस किया है। 73 रन्स इन जस्ट 55 बॉल्स, और उनका स्ट्राइक रेट जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं 132 रनों का है, अराउंड 133 टू बी फेयर, बिकॉज दैट इज 0.73। 133 का स्ट्राइक रेट इज नॉट बैड। मित्तल जोशी और अभिमन्यु कांक के बीच ये फाइनल बैटल, क्लोज विकेट कीपिंग कर रहे हैं अंकुश ओबरॉय। सो यानी कि ये आगे ही बॉल रहेंगे, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल। Look at that striking. Good footwork. And a work being done. What a stop that was, Abhijit. Oh, what a stop that is. Superb striking being done by Abhimanyu. What a wonderful stop that was. With that single, 150 runs on board. A shot that's been flicked toward the leg side. And has it gone all the way? Yes, it does. Oh, flick that has gone all the way for a maximum towards the fine leg. Right flow of the bat. Held the edge. Racing above. And that has gone all the way for a maximum. What a time to bring in a maximum for the team. 8 runs of this over. Last 3 deliveries left. 156 on board. If they get to a total of 160, they would be very happy with the performance that the team has done it.
Last 3 deliveries left. Kaywood has brought in a maximum. Another connect. Going towards the covers area. Sunny would cut that off. And they should be able to get a single there. 9 runs being scored in the last 4 deliveries now. Last 2 deliveries of this over and of the inning. Abhimanyu on strike. And look at that, a connection that's done well. But since beginning, I have been saying that the field setup that's been done by the captain is absolutely wonderful. A single being taken, so 10 runs till now in 5 deliveries. Kaywood comes back on strike to face the last delivery. Will he be able to get a boundary or a maximum? We would have to wait and watch. So last delivery coming in now. Kaywood on strike, facing Mr. Mittal. He pulls that again in the same direction and getting a great result to end the inning. And with that boundary, the score becomes 162. It's a good total, and look at the way he connected that. Smart cricket that is. He knew where the fielders are, and he gets crucial runs for the team. So 162 runs being put up in front of the Pink Panthers in this final. We will come back after a short inning break.
वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का रन चेस के लिए। देखिए हमारे कैमरामैन का भी स्वागत है। सीधे जूम इन कर दिया है कि हमारे दोनों बैटर्स है, एक तरफ है जितिन मेहता ए बुली और उनके साथ है विकेट कीपर बैटर अंकुश ओबरॉय। थैंक यू सो मच टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, एम पॉप, पॉपकॉर्न विद मैजिक, गस कैप एंड एसेसरीज, जल स्पर्श एंड गियर अप स्पोर्ट्स। बॉलिंग के लिए तैयार है कपिल मकवाना with his lucky jersey number 101. पहली गेंद, that was a low full toss ball and he clears the infield, लेकिन डीप कवर्स पर फील्डर मौजूद है वरुण। सो पहला रन आता हुआ रन चेज में 163 का रन चेज है, राइट। 162 रन बनाए थे 7 विकेट खोकर, जिनमें से सबसे किफायती योगदान रहा था अभिमन्यु काक, जिन्होंने 73 रन बनाए। करेक्शन 75 रन बनाए थे। कपिल की अगली गेंद, बैंग्ड इन शॉर्टर, अंकुश ओबरॉय। यस, दैट्स द वे टू डू इट। अंकुश ओबरॉय का ये अंदाजा इसी तरह से दिखाई देता हुआ चौका मिला है रन चेज में। ये पहला चौका देखिए, फुल टॉस बॉल थी, ऑन द वेस्ट उसे गाइड कर दिया। जितिन मेहता, इनकी आदत है कि वो स्ट्राइक रेट 130-140 पर ही रखने की कोशिश करते हैं। ओ, दिस वाज अ राइजिंग अप डिलीवरी दिस टाइम बाय मार्क। डॉट बॉल है, पहली बार सफल हुए हैं मार्क, इनफैक्ट दूसरी बार डॉट करने में सफल हुए हैं। पहले ओवर के बाद स्कोर है 7, बिना कोई विकेट पर पिंक पैंथर्स। That was a great over. The way this over was being started, there was a boundary which was being smacked in that over, but the deliveries were being bowled absolutely wonderful to watch. The way the over was being ended with the bouncer, it looked too perfect for any of the bowler to bowl some great deliveries for the team's department. They need a good start. They need a good start from every single bowler. The total is not that huge, but on this particular ground, this is one of the total that have been very difficult to chase down. 160 plus. Oh, not the right way to start your over, my boy. That has gone as a wide and a boundary as well. You can't afford to begin your over with that kind of a delivery. Take your time, have the control on the seam position, bowl your deliveries in the right areas. 5 without a delivery already been posted in the account of Paryank. Another delivery there. There was a height appeal that happened. Meanwhile, they have taken a leg. Another boundary being added to the total. 9 runs in extras in this over already. Expensive over to be started. 2 legal deliveries. Just 2 legal deliveries. And 9 on board in this over. They need to have a control on the extras, but they have already leaked. Just the second over in progress. And extras being leaked. Too many. And look at the shot. A quick run being requested. Responded well by both the batters. Strike being donated.
Smart cricket. This is what you need to do. If you have a couple of boundaries coming in any of the overs, there's no need for you to take any kind of a risk. Just need to keep on rotating the strike. That's a good delivery in the air, between the gap of the point and the third man. Another boundary, an expensive over now. Oh, Paryank was being handed over the ball by the captain. And that has turned out to be an expensive one of the inning till now. A cracking boundary. Jitin striking that too well. They had a boundary as a bye, and they had another boundary that was being bowled outside the leg stump as a one delivery, which went straight towards the boundary. A field change being done by Viraj behind the stump, sending the point in the deep. He charges. The batsman charges and plays that shot straight toward the fielder at the square leg. A single being taken. Expensive start from the team Golden Tigers now. 23 on board already. Last delivery coming in of second over. Striking done well. Goes straight toward the fielder. A quick single being taken. A strike being rotated. So 2 overs have been completed. Pink Panthers look strong at the moment with 24 on board without a wicket. ₹24 runs after 2 overs. So expensive over, bro. पिछले ओवर में आए, पहले ओवर में आए थे कितने 7, दूसरे ओवर में आए कितने 12, 17. वो तो एक्स्ट्रास में गए ना, बॉलर ने खर्च किए इतने यार. एक्सपेंसिव ओवर, लेकिन कोई बात नहीं. पिंक पैंथर्स 24 runs on the scorecard after 2 overs. 24 रन हुए हैं स्कोर कार्ड पर और रन चेज में बहुत ही मजा आएगा. 163 का टारगेट है. बिग थैंक यू टू ऑल आवर स्पॉन्सर्स, एम पॉप, पॉपकॉर्न विद मैजिक, जल स्पर्श, गियर अप स्पोर्ट्स एंड गस कैप एंड एसेसरीज. कपिल मकवाना अपने दूसरे ओवर में, ओ लुक एट दैट चीकी बाउंसर. लॉन्ग स्टॉप रीजन पर कोई फील्डर है नहीं, सो दैट इज द रीजन यहां पर खतरा हो सकता है. अंकुश ओबरॉय बाल बाल बच गए. गुड रनिंग ब्रो. जिस तरह से अंकुश दौड़कर चले गए मानो जान हलक में थी धनंजय. ऐसा दौड़े मानो उसेन बोल्ट भी अगर उनके साथ रहते तो हार जाते. वेल डन अंकुश. बीमर गेंद की थी, आई थिंक सो हेलमेट की तरफ लगी, लॉन्ग स्टॉप रीजन पर चली गई, फिर भी भाई का हौसला टूटा नहीं है भाई. अक्सर तेज बॉलर जब भी बैटर्स पर इतने तरीके से हावी होते हैं तब बैटर को दिन में भी तारे दिखाई देते हैं. आई थिंक कंकशन रहेगा. जी हाँ, हमारे डॉक्टर केदार अब दौड़ रहे हैं मैजिक स्प्रे लेकर, एंड ऑल्सो केतन राय दौड़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे. हेल्प की जरूरत है. आई थिंक हाथों को लगी थी.
स्पेशल 26 पर रुका है स्कोर। वीरू भाई ने अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए, बहुत क्रूशियल है। जिस तरह से आप रन चेज में रन्स बचाते रहेंगे तो बैटिंग टीम पर उतनी जिम्मेदारी बनेगी। कपिल मकवाना एक बीमर करने के बाद ना भाई अपने असली जलवे दिखा रहे हैं, बहुत जरूरी है। जिस तरह से कपिल ने आज अपने लिए परफॉर्मेंस करना सही समझा है, बहुत क्रूशियल है। जिस तरह से उनकी बॉलिंग बहुत किफायती होना जरूरी है। पहले ओवर में कपिल भाई ने रन्स दिए थे 7। इस ओवर में आइए देखते कितने रन्स और कितने विकेट्स वो ले पाएंगे। कपिल इस बार वीरू कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज नॉट सो गुड बॉल। वाइड +4 यानी कि पूरे 5 का फायदा। वीरू करे तो क्या करे, 5 रन्स इन एक्स्ट्राज, 5 का फायदा। सौरभ, हम बात कर रहे थे कि पावर प्ले में 50 से 60 का आंकड़ा आना चाहिए, और अगर ऐसे फ्री वाले रन्स मिलेंगे तो भाई आसानी से मिल सकते हैं। पहले पावर प्ले में अगर 60 रन बन गए सौरभ, तो बचे हुए ओवर्स में सिर्फ 100 रन बनाने हैं, विच इज ए इजी टास्क अगर आपके विकेट सुरक्षित रहे तो। कि हमारी जो केटरिंग टीम है ना, बहुत स्वादिष्ट खाना परोस रही है और बना भी रही है। सौरभ ने लंच भी आज यहीं किया, मैच के पहले एक मैच करके आए हैं। सौरभ इज ऑल्सो हार्ड वर्किंग मैच ऑफिशियल, स्कोरर है, क्रिकेटर है, अद्वितीय है भाई। कितना टैलेंट है सौरभ, एक ही इंसान में इतना टैलेंट कैसे। हमारे धनंजय साहब है जो उनकी उंगलियों का जादू अक्सर दिखाते आते रहे हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, थ्रू बॉल हो, या हमारे पुणे में, हमारे इस जिले में बैलगाड़ी शरीयत यानी कि बुल रेस जो होती है, इसमें भी धनंजय भाई ये देखिए अच्छा थ्रो था, इसमें भी अपने उंगलियों का जादू दिखाते। थैंक यू एनबी ब्रॉडकास्टिंग की हमारी ये पूरी टीम है जो स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग के आज फाइनल डे में हमारे साथ जुड़ी है। 34 पर आया है स्कोर, 34 रन्स ऑन द स्कोर कार्ड। वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हमारी जो काबिल ऑडियंस जो यूट्यूब के द्वारा हमसे जुड़ी गई है, उनका स्वागत है, वेलकम। चलो, तो लेग बाइस के रूप में ये रन जोड़ा जाएगा। एसपीजे लोनावला की इस खूबसूरत ग्राउंड पर जो ऑडियंस आई है ना, उनके लिए ये पैसा वसूल फाइनल्स होगा, आई गारंटी दैट। आमतौर पर मैं गारंटी देता नहीं बॉस, लेकिन क्रिकेट के बारे में अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, तो एसपीजे लोनावला के इस खूबसूरत ग्राउंड पर आ जाओ, गारंटीड एंटरटेनमेंट है। Jitin hits that ball well. No chance for Jatin Mehta there. Quick single grab by Jitin Bully. कि बुली भाई पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने आई थिंक सो एक या 2 हाफ सेंचुरी जड़ी हैं, और आज ये फाइनल्स में भी वो चाहते हैं कि उनकी बैट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाए। 7 गेंदों पर 9 रन फिलहाल जितिन भाई, एंड अंकुश तो अपने जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं। लेट्स सी, बैंग्ड इन शॉटर। अंकुश तेज बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, ये हमने देखा है पिछले 3 सीजन्स में भी। ओवर हुई है खत्म, 3 ओवर के बाद स्कोर है 37 विदाउट लॉस, 37 रन बिना कोई विकेट पर 3 ओवर के समाप्ति पर। A target of 163 is there in front of the Pink Panthers at this particular moment. The way these guys are striking doesn't seems to be a big total in front of them. But we can't deny that the team Golden Tigers have some great bowlers as well in that department. They haven't used one of their very experienced bowler, which is Prashant Jethmalani, who's been very experienced with the left arm spin. And as I have been saying this since beginning, a left arm spinner in your department is absolutely a golden thing to have. So कॉम्बॉक्स में हमारे साथ है कियांश। कियांश के पापा बैटिंग कर रहे हैं, हु इज एट द बॉलर्स एंड। कियांश, पापा को क्या कहना चाहोगे?
Now is my dad going to win? Okay, so Kiyansh already predict कर रहा है कि my dad is gonna win. Raj Gogate, wicket taking bowler, आ चुके power play में. अंकुश ओबरॉय, oh, hits it in the gap, places it well, but Kapil Makwana did well to stop the ball. 2 run. "39 on board already, 3.1 overs done. What a good score this is. And what a way this start have been given by Ankush and Jitain. One of the strike bowler coming in, Raj. Good running in the wicket. Direct hit could have been something that they would have cheered for. Running between the wicket have been wonderful between both these guys. They need to strike. They are looking out for the first strike. They need couple of good overs. The team Golden needs couple of good overs in between to come back in the game, because they have leaked too many runs in the first 3 over itself. 40 already on board. Just the 4th over in progress. Ankush and Jitain have built up a good partnership. A start that the captain would be expecting from both the openers. Beautiful delivery there from Raj. Very close to the bat. The batsman wanted to play on the back foot towards the third man, but misses that completely. Brilliant delivery that is. And the ball stayed low. The shot goes straight toward the fielder at the point. Another dot delivery. It's been a good over till now. Just 3 of the 4 deliveries being bowled. Another delivery going in the air, but this time above the head of the point fielder and getting a boundary to add to the total. What a shot that is. This is what I was saying, that they are playing very smartly. They are playing very smartly at the moment. They are rotating the strike. They are bringing in boundaries in between. And with that boundary, the scorecard moves to 44. 44 at the moment. Last delivery coming in off the over. He plays that again on the back foot, but this time it will only be a single to end the over. So over number 4 to an end, 45 on board without a wicket. चलो वेलकम बैक. 45 runs and first 4 overs, so a handful over for team Pink Panthers. 45 runs on the scorecard. So चलिए, after 4 overs 45 runs आप bowling के लिए तैयार हो रहे हैं. लेफ्ट हैंड बॉलर पुनीत देसाई. पुनीत देसाई और विकेट टेकिंग बॉलर जो हमेशा से ही आते हैं और विकेट ले जाते हैं, ऐसा उनका रवैया रहा है पूरे स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 में. लेकिन जिस तरह से आज जितिन मेहता बैटिंग कर रहे हैं, लेट्स सी क्या वो उनको बीट कर पाएंगे. पुनीत शाह, ओके, पुनीत शाह
नॉट पुनीत देसाई, पुनीत शाह, सॉरी पुनीत भाई, पुनीत शाह हमारे नए बॉलर हैं। मोस्ट एग्रेसिव बॉलर ऑफ सीजन 23-24, ये अवार्ड मिला था ऑक्शन डे पे अवार्ड्स सेरेमनी में। एंड अग्रेशन कंट्रोल रहता है ऑलवेज पुनीत भाई का। ओवर थ्रो था ये, मार्क ने अच्छा बैकअप किया है। सो पुनीत का अग्रेशन आज फाइनल्स में दिखाई पड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। सौरभ थैंक यू सो मच यार, स्कोरर हो तो ऐसा वरना ना हो। कोई अगर एरर है तो फटाफट से उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है भाई, नहीं तो सिस्टम में कीड़े लग जाते। क्या होता है? बग। क्या है बग? मराठी में बग अलग होता है, इंग्लिश में बग अलग होता है, राइट? सो अगर ये बग लग गया तो भाई सब लोग आ जाएंगे कॉम्बॉक्स में। सिंगल आएगा। बहुत स्मार्टली जितिन ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए, अंकुश ने इनफैक्ट स्ट्राइक रोटेट करते हुए अब बुली भाई को स्ट्राइक पर लाया है। बिकॉज बुली जिस तरह से वो अग्रेशन में खेलते हैं, आते ही फटाफट रन्स जोड़ने की उनकी आदत है और एडवांटेज ले लेते हैं पहले 6 से 7 ओवर में। अब तक उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है 15 रन 12 गेंदों पर, क्योंकि ऑफ द स्ट्राइक रहे। अंकुश ने ज़्यादातर गेंदे फेस किए हैं, 14 गेंदे अंकुश भाई ने फेस की हैं। लेट्स सी पुनीत को किस तरह से फेस कर पाते हैं जितिन। चलिए डाउन द ग्राउंड खेला है, उतनी अच्छी एफर्ट। भव्य गाला आज टीम गोल्डन टाइगर्स में है। अच्छी फील्ड प्लेसमेंट रखी गई है। कैप्टन वीरू विकेट कीपर कैप्टन है वीरू भाई, जिन्होंने आज अभिमन्यु के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप बनाई थी पहले इनिंग्स में। ये अच्छी गेंद, दिस वाज अ ड्रिफ्टर डिलीवरी बाय पुनीत शाह, जस्ट 1 रन ऑफ इट। सिंगल के साथ रनों का ये सिलसिला आप पहुंचाए 48 रनों पर, 48 विदाउट लॉस। वी आर इनटू 5th ओवर। इस ओवर की गेंदें बची है 2। फ्लड लाइट्स ऑन तो हुई है, लेकिन अब तक दिन इतना पूरी तरह से ढला नहीं है। सो आप कैमरा में जब भी आप देखेंगे तो कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट्स आपको नजर आएंगे, बिकॉज द रीजन इज दैट अब तक पूरी तरह से दिन ढला नहीं है, रात इतनी अभी तक शुमार पर दिखी नहीं है। जब ऐसा होगा तो आपको बैकग्राउंड पर पूरी तरह से अंधेरा दिखाई देगा और ऑन फील्ड चकाचौंध रोशनी दिखेगी इन फ्लड लाइट्स की। वन ऑफ द बेस्ट ग्राउंड इन आर स्टेट इन महाराष्ट्र। पुणे का ये सर्वश्रेष्ठ ग्राउंड है जहां पर अक्सर मुंबई से टीम्स आते हैं फाइनल्स खेलने के लिए। एंड ऑफ ओवर नंबर 5, 49 विदाउट लॉस। इस ओवर में रन आए हैं केवल 4। So a game of 5 overs done in the second inning. The equation what they have is to get 114 in the last 90 deliveries left. Team Golden, the Tigers need couple of Tigers to roar at this particular moment, because the striking that's been done till now have been wonderful from both the batters, and they have been able to score too many runs in the first over. Good field setup being done by the captain Viraj, and the deeper fielder being sent in the covers area. That's the right field setup. And with that single, the scorecard moves to 50 runs on board. Just the 6th over in progress. Captain have handed over the ball to Bhavya. He's bowled some great overs for the team, great spells. This is going in the air. Any fielder getting sandal under it? There it is, but he drops that. Oh, one of the best fielders in the team, Golden Tigers, drops the catch. That was a chance. That could have changed the momentum completely. You need to take these chances
When the batting team is performing too well, you need to get the right striking at the right time. Batsman goes deep in the crease, but a delivery that's been bowled outside off. Umpire says it's a wide delivery. Good take by the keeper. Right behind the stumps, the captain himself, Viraj Gandhi. They need a couple of good overs. Couple of good overs to come in the match. Is there another chance? This time, they do not miss and gets a wicket at the right time. The big man departs. Jitain being sent back in the pavilion by Bhavya. And the change that was being done by the captain has worked. And a wicket falls. The 53 on board for the loss of 1 wicket. The team, Pink Panthers. Oh, the striking being done. As I said, the captain handed over the ball to one of the experienced bowler and he brings in a wicket. There was a drop chance that happened in the deep at the long on by Abhimanyu. But luckily that did not cost them much. And a wicket in this over. And look at that delivery. Right pitching that Bhavya is doing at this particular moment at the right time. He broke the partnership which was needed for them. This is the 6th over in progress and the last delivery coming in. Striking being done towards the covers area. Fielder being set right inside the circle and a single being taken to end over number 6. So 6 overs have been completed. 54 on board for the loss of 1 wicket. यस सो 6 ओवर के बाद एक अच्छा ओवर कंप्लीट किया है और इस ओवर में बड़ी विकेट आई जितिन मेहता की। अब बॉलिंग के लिए आए हैं पुनीत शाह। वीरू भाई की विकेट कीपिंग बहुत ही शानदार रही है। ऑलमोस्ट उन्होंने अब तक सो चैलेंजर फाइनल्स आप देख रहे हैं दोस्तों। उर्मिल विसारिया एक डिपेंडेबल बैटर है फॉर पिंक पैंथर्स। लीग के लास्ट मैच में उर्मिल विसारिया इस वजह से उनको उस मैच में खामियाजा भुगतना पड़ा था, बट फाइनल्स में आए हैं ना, तो फाइनल्स में आप अगर आए हो तो अपने बैटिंग का करिश्मा दिखाओ, दैट टू एट द वेरी ओन एसपीजे लोनावला के ग्राउंड पर। तो ये अंकुश ओबरॉय है ना, एक को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं ये दोनों ही बैटर्स। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अंकुश ओबरॉय ना, ही चीकी ना, गली क्रिकेट में कैसा होता है ना, आजू बाजू में बिल्डिंग्स होती है या चॉल्स होती है या सोसाइटीज होती है, खेला बैट को लगा तो भागो। तो अंकुश का रवैया एग्जैक्टली वैसा है, बैट को लगा कि भाई भाग जाएंगे। वेरी चीकी। गली क्रिकेटर्स ऐसे ही होते हैं, स्ट्रेट ड्राइव ज्यादा मारते हैं ना। एक गली क्रिकेटर जो पूरे दुनिया में मशहूर हुआ वो है एसआरटी सचिन रमेश तेंदुलकर, जो सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव लगाते रहते थे, बस आजू बाजू में डिक्लेयर जोन रहता था ना। रन जब आपको बनाने हैं तो उस तरह से सोच रखनी पड़ेगी। अंकुश ओबरॉय भी ऐसे ही चीकी प्लेयर है जो हर बॉल पर रन्स बटोरने की कोशिश करेंगे, ये तो तय है। पुनीत
चलिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस क्यों हुआ है, बैट ऑफर करते हुए, शॉट को ऑफर करते हुए बैट थोड़ी सी मुड़ गई, दैट इज द रीजन यहाँ पर सिर्फ 1 रन से संतुष्टि मिलेगी। डीप यानी कि स्क्वायर लेग में जो खिलाड़ी मौजूद है सैबी, जो डीप स्क्वायर लेग रीजन पर मौजूद थे, पिछले ओवर में बहुत ही अच्छा कैच लिया जितिन का। इट इज़ नॉट ईजी, फ्लड लाइट्स में जितने भी हाई कैचेस है अबाउट 10+ मीटर्स, वो कैचेस डिफिकल्ट रहते हैं, वो लेना एक चैलेंज रहता है हर फील्डर के लिए। बट केडी मेड श्योर कि भाई वेरी स्मार्ट, वेरी फाइन, प्लेड इट वेरी फाइन, बॉल इज गोना ट्रैवल, नो नो नो, टीजे बॉल को रोकेंगे और रिटर्न करेंगे, बिकॉज आउटफील्ड थोड़ी सी ज्यादा है, आउटफील्ड पे जो घास है थोड़ी सी ज्यादा है, दैट इज द रीजन वो बॉल रुक गई। 2 रन बटोर लिए विद दोस 2 रन, स्कोर इज एट 61 for 1, वी आर इनटू ओवर नंबर 7। अब जो रिक्वायरमेंट है वो है 102 रनों की, 102 रन्स नीडेड इन 79 बॉल्स, 102 रन इन 79 बॉल्स, बराबर ना भाई? ये तो लॉली डॉली एंड जॉली इजी है। उर्मिल को यार लो फुल टॉस बॉल करोगे भी ऑन लेग स्टंप पर, तो ऐसे ही फाइन खेलेंगे। चौकी के साथ ओवर खत्म एट द एंड ऑफ ओवर नंबर 7, 65 for 1। The kind of an inning that's been played by Ankush till now for the team has been very smart. They are pretty much aware that they do not need big striking. They need right partnership, right striking at the right time. They don't have to bring in boundaries in between because the equation doesn't look that big. He strikes that in the air, but they would have to settle only for 1 because the fielder is being set up by the captain in the deep. The single being taken to start the over. Urmil and Ankush on the crease at this particular moment. Short pitch delivery now. Short played. Straight toward the fielder standing at the covers inside the circle. A single being taken again. Now the only thing that's required for the team Golden Tigers at this particular moment is a couple of good overs, 2 or 3 quick wickets which can bring back the momentum to them. This particular moment, the Panthers are on up front. They are playing too well. Too well they are. Rotation is happening. Right time. They are bringing in the boundaries whenever needed. You saw the previous over which was being bowled too well. And right in the last delivery, a sweep shot went well in the gap and a boundary was being brought in. This is going in the air. This will fall in the safest area, which is the no man's land area on the ground. A huge ground was supposed to be covered to take that catch for the long off fielder, which was too difficult. But that cannot happen. Need to be too quick for those kind of catches. And look at that. Bhavya is the man who's leading from front for the team Golden Tigers, and who's roaring like a tiger. Bhavya, the man who's brought in both the wickets for the team at the right time. This is his second over, and he has struck in every over for the captain. And the captain looks too happy at the moment.
Wow, what a comeback from the Tigers now. 69 on board, 8th over in progress. Equation doesn't look that big at the moment, but you know how good these bowlers are for the team Tigers. 73 deliveries left, 94 to get with 8 wickets in hand. The new batsman who just stepped in is Vishal, facing the last delivery coming in from the successful bowler Bhavya. So last delivery coming in from Bhavya. Vishal would be on strike facing that. Beautiful delivery. Respecting that kind of a delivery and running between the wicket have been wonderful. And Vishal is off the mark with that single. So 8 overs have been completed. 70 runs on board for the loss of 2 wickets. So देखिए 8 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं. Now one of my favorite bowler coming in, Prashant Jethmalani. He's bowled some amazing overs for his team. He has changed a lot of matches with his bowling. Was that a catch? Was that a catch? And look at that, what had just happened. What had just happened? An overthrow has costed them another run. Oh. Oh, look like that was a chance. Let's have a look at the replay. Edge going straight toward the fielder, standing at the point. Chance of a run out. But the umpire says no. If that would have been a quicker throw, then that would have made the chance. A field change that's been requested by the captain. We would have to wait and watch. What difference would that make? Prashant bowling this delivery to Urmil. Flighted delivery again. And a smart single being taken. It becomes too difficult for any kind of a bowler who's bowling any delivery with a less speed. It is very difficult for any of the batter to step outside the crease and start striking to that kind of a bowler, which has been a scenario with Prashant and the spells that he has bowled for his team in the past in other tournaments as well. Look at that. This is what I was saying. It becomes very difficult to strike any of the deliveries to Prashant because the delivery that he bowls doesn't quick that quick. He bowls with a very different kind of a speed. Just singles coming in this over. 5 of the over till now and 4 deliveries being bowled by Prashant. There's an appeal. There's an appeal.
But the umpire said that has touched the bat. That was from the bat. Right decision being given by the umpire. Good over till now. Ninth over in progress. 78, 76 on board at the moment. Flat delivery again, going in the air. There's a fielder there in the deep, and they would have to settle only for one. So 7 of the first over being bowled by Prashant. 9 overs done, 77 on board. They have an equation of 86 to get in 66 deliveries remaining. सो भव्य आ चुके हैं नई ओवर लेकर 77 फॉर 2। सौरभ हमारे जो काबिल स्कोरर है ये बता रहे हैं कि अब ओवर नंबर 10 शुरू होने वाला है। 9 ओवर के बाद 77 पर 2 यानी कि बचे हुए 66। 11 ओवर में 86, डिफरेंस ज़्यादा है नहीं। विशाल मेरवाना आए हैं फटाफट रन जोड़ने के लिए। जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक इस ओवर के बाद होगा। जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक, जल स्पर्श फील द पार एवरी यार। चिराग जोशी, इनका मैच अगला है जस्ट हमारे कॉम्बॉक्स के सामने, इसलिए मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ कि जल स्पर्श ये कैंगेन वाटर है, 6x हाइड्रेटेड और करते हैं। अगर ये पानी आप पिएंगे इट हैज़ 7+ pH बैलेंस वैल्यू। सो श्योरली आपको ये पानी पीना चाहिए। जल स्पर्श के बारे में आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डू कॉन्टैक्ट चिराग भाई जोशी, चिकी भाई। भव्य, लेट्स सी कैन भव्य गेट अनदर वन फॉर हिज टीम। उर्मिल इस बार थोड़ा सा चूके, भव्य ने एक नहीं दो विकेट लिए। शुरुआती के दोनों जो बैटर्स हैं अंकुश एंड उनके साथ जितिन बुल्ली आए थे बैटिंग करने के लिए, उनको डिफरेंस ज़्यादा है नहीं दोनों। 20 का डिफरेंस जो अभी 21 या 22 पर हुआ रहेगा, जितने बॉल से उससे 20 ज़्यादा रन है। सो कॉशियसली खेलना पड़ेगा। उर्मिल विसारिया हैज़ दैट कैपेसिटी टू स्कोर बिग रन्स। अगर उर्मिल बने रहेंगे पोस्ट हाइड्रेशन ब्रेक तो ज़रूर वो बड़े रन जोड़ेंगे अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं। ये देखिए जैसे हम बात कर रहे थे, ये वाइड है, वाइडिश बॉल को छेड़ना चाहते थे उर्मिल, ऐसा मत करिए, डू नॉट ट्राई टू डू दैट। 79 for 2। स्कोर रिमेन्स 9। अब यहां से एक बड़ा शॉट आ रहा है, जी ऐसी उम्मीद थी, लेकिन ये वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल खेल दिया है उर्मिल ने। उर्मिल थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा उर्मिल को, कुछ गेंदों के लिए ज़्यादा नहीं। इस ओवर में गेंदें बची है सिर्फ 2, और आई थिंक विशाल भाई नीड टू टेक द कंट्रोल फॉर द नेक्स्ट 2 डिलीवरीज। सौरभ, अक्सर हम यही कह रहे हैं कि आपको ना संयम यानी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, आपके जेब में, ऊपर वाले भी नीचे वाले भी। अगर आप संयम रखेंगे ना बॉस, जिंदगी में आपके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल।
So yes, welcome back after जल स्पर्श हाइड्रेशन ब्रेक 80 for 3, 80 पर 3 है पिंक पैंथर्स। और अब जो रिक्वायरमेंट है वो है 83, 83 रन टू विन इन रिमेनिंग 10 ओवर्स। मतलब जो बॉल और रन्स का जो फासला है, सौरभ बता रहे हमें पूरे 20 का। हाँ 20 रन्स का ना, 23, 163 चाहिए थे तो अभी 83 है। हाँ 23 भाई, मेरा मैच बहुत कच्चा है। थैंक यू सौरभ, हमारे प्राउड स्कोरर है, एनालिटिकल अच्छा करते। राज गोगाटे आएंगे बॉलिंग के लिए। बैट्समैन आया है जो बॉलर्स एंड पर मौजूद, आई थिंक धीरेन आए हैं, धीरेन डेडिया। जस्ट कंफर्म करते हैं हम एक बार फिर से। धीरेन ही है विद हिज वाइट पैड्स, धीरेन डेडिया ही आएंगे अप द ऑर्डर। यस धीरेन है। सो धीरेन आए ना, मतलब उर्मिल और धीरेन, ये ताबड़तोड़, विच मीन्स हमारी लोकल मुंबई लैंग्वेज में बोलते हैं ना फाटाफाटी। मतलब मजा आएगा पोस्ट हाइड्रेशन ब्रेक में ना, देखने में मजा आएगा जिस तरह से। और ये देखिए ये कैप्चर हो रहे हैं ये सारे। हमारी जो ऑडियंस है जो स्पेशली आज पहले फ्लाइट से आई है, ये प्यारी खूबसूरत ऑडियंस है जो आज हमारे साथ जुड़ी है टू सपोर्ट द बेटर हाफ। यार हमेशा आने मिलता नहीं है ग्राउंड पर, और इतने अच्छे ग्राउंड पर क्यों ना हम आए। हमारी पूरी पिंक पैंथर्स का स्क्वाड आपको, और ये किका भाई गिरते गिरते बच गए। किका भाई एक फाइनल बचा है, प्लीज गिरिए मत, मजा आ रहा है। राज गोगाटे वर्सेस धीरेन डेडिया के बीच मैच देखने मजा आएगा। उर्मिल गए थे, लगभग रास्ता नाप लिया था उर्मिल ने, अगर राज गोगाटे हिट करते तो। बॉस ये नहीं चलेगा, रन चेज इतना अच्छा दिख रहा है, तब आप रिस्क रन ले क्यों रहे हो, क्या जरूरत है। धीरेन डेडिया डीजे शफल होकर अक्सर लॉन्ग लेग की तरफ मारने की कोशिश करते हैं, और राज बहुत अच्छा रीड कर चुके हैं धीरेन को इस सीजन में, इसलिए ना वाइडिश लाइन की तरफ बॉल को पिच कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। अ वेरी गुड लर्नर ऑफ द गेम राज गोगाटे, टीम के वाइस कैप्टन है, आइकन है गोल्डन टाइगर्स के, स्मार्ट। धीरेन डेडिया जानता है कि राज गोगाटे को बेहतर तरीके से खेलकर निकालना है, अदरवाइज काम खराब हो सकता है। बिग थैंक यू टू ऑल आवर ओनर्स, पिंक पैंथर्स की प्राउड ओनर डॉक्टर मिशेल पारेख, को ओनर विशाल मेरवाना एंड आइकन मित्तल जोशी। तो दूसरी तरफ गोल्डन टाइगर्स के प्राउड ओनर मिस्टर विराज गांधी जो कैप्टन भी है, एंड को ओनर केडी सिंह एंड आइकन राज गोगाटे। रन चेज, बैट वर्सेस बॉल, क्रिकेट का तो यही फंडा रहा है कि ये जंग ऑलवेज हम देखते आएंगे, और मैच अगर इस मोमेंट पर आएगा आने वाले 2-3 ओवर में, हमें लगभग पिक्चर थोड़ा सा क्लियर होने लगेगा। उर्मिल वेसारिया, दैट्स अ बिग वन, ये लगता हुआ 6 रन, दैट इज अ 6 क्रैकर ऑफ अ शॉट। मान गए बिडू, उर्मिल की बैटिंग को देखने में मजा आएगा, हमने ये प्रेडिक्ट किया था जस्ट बिफोर द हाइड्रेशन ब्रेक। और क्या पट्टे पे लिया है भाई, पट्टे पे बोलते इसे। डीजे बता रहे सर यही बातें चाहिए, आड़ा नहीं खेल रहे हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द मेरिट। और हमें कोच यही सिखाते हैं ना ग्रास रूट लेवल पर, बिगिनर्स लेवल पर, कि प्ले अकॉर्डिंग टू द मेरिट ऑफ द बॉल, या इन द लाइन खेलिए, थ्रू द लाइन खेलिए, अक्रॉस बिल्कुल मत खेलिए। आजकल हो गया है T20 वाला जमाना, लेकिन टेक्निकल क्रिकेट इज ऑलवेज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। बहुत सही, उर्मिल बैट का फेस हल्का सा ओपन किया था, पैरी ने अच्छी एफर्ट की है शॉर्ट थर्ड की तरफ, और कुछ रन बचाए। सिंगल के साथ रनों का ये सिलसिला आ पहुंचा है पिंक पैंथर्स का। 89 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स आफ्टर 11 ओवर्स। 11 ओवर के बाद 89 फॉर 3 पिंक पैंथर्स।
What an interesting contest that you're watching live on YouTube at this particular moment. It's a match that is happening between the Pink Panthers and the Golden Tigers. And a comeback that's been done too well by the Tigers. Oh, and there was a chance on the first delivery for Sabi. But he drops that. Well, they have brought in the right wickets at the right time. The equation what they have at this particular moment is to get 73 at this particular moment in 53 deliveries left with 7 wickets in hand. They've seen a great striking being done in the previous over. Ideally, you should be playing a bit lower how you usually play in your batting style on this particular ground, because this pitch has uneven bounce. Most of the time, the ball would stay low. Brilliant delivery that was. Enough bounce and a good take behind the stumps by the captain himself, Viraj Gandhi. Prashant Jetmalan is standing inside the circle at the covers. Dot delivery there. Another good delivery. Healthy is racing toward the fielder at the third man. He does well, saves 3 runs for the team. Both the batters would have to settle for a single. Single is something that is not going to hurt the captain or the bowler as well. They would be very happy if a bowling performance is being done. Couple of good overs from here and a wicket can put the team Pink Panthers on the back foot. They need to have a good partnership now. Just before the drinks break, they lost another wicket, which was a crucial one. Look at that delivery. Look at that delivery. Change of pace, change of pitching that's been done. Smart cricket, absolutely smart cricket. This is what experienced bowlers will bring it into your team. They know what kind of bowling to be done and which time. The situation is too different for any of the bowler to be bowling in this particular momentum that's been set up. 91 on board, 3 wickets down, a striking being done. Chance that is racing towards the boundary. What a striking. What a striking. That was too far from the fielder. The bowler kept shouting at the fielder that should have been stopped. But for me, it was an unstoppable shot. No way. No one could stop that cracking boundary that came in from the bat of Urmil. This man is playing a great inning for the team with that boundary. He moves to 28, 26. Last delivery coming in. It had been a good over till now. Just 2 runs have been scored in 4 deliveries. And a boundary now. We would have to wait and watch. How does he finishes that? Last delivery of over number 12 for you. And a bouncer and a smart shot. Is it racing for a boundary? Yes, it does. Oh, what a way to end the over with 2 cracking boundaries. That will take them to a total of 10 runs that have been scored in that over. Right time, and look at that connection. Superb shot. One of the favorite shots that's been played by Venkatesh Iyer in the entire IPL career. So 10 runs of their over will take them to 99 on board. 12 overs done, 99 on board for the loss of 3 wickets. They have an equation of 64 to get in 48 deliveries left. केडी सिंह की ओवर शानदार थी.
लेकिन आखिरी का जो शॉट था ना डीजे, स्कोर इज 99 फॉर 3, 99 पर आ चुकी है ऑलमोस्ट। सेंचुरी के लिए 1 रन बचा है, यानी कि और 64 रनों की जरूरत है। 64 नीडेड इन रिमेनिंग 8 ओवर्स। 8 ओवर में 64 मुमकिन है, हो सकता है, होगा या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज अगर ये पार्टनरशिप टूटती है तो उसके बाद आएंगे एमजे, जो फिनिशर की भूमिका ऑलवेज रहते। लेकिन अब आइए देखते प्रशांत जेठमलानी टू धीरेन डेडिया। धीरेन डेडिया समझदार है, बहुत ही मैच्योर क्रिकेटर है। एक तरफ उर्मिल विसारिया का बल्ला बेहतर तरीके से कर रहा है हल्ला, तो लेट्स गिव इट स्ट्राइक टू उर्मिल। ये सोच बहुत सही है। और जो रैम शॉट खेला ना डीजे, यार मुझे हार्दिक पांड्या की याद दिला दी भाई। एक बार ऐसे ही डीवाई पाटिल में, फिरोज डीवाई पाटिल T20 चल रहा था और हार्दिक ने ये शॉट जनरेट किया था, तब मजा आया था उनको देखकर लाइव स्टेडियम में। और एग्जैक्टली वही शॉट उन्होंने रिपीट किया आफ्टर 2 इयर्स अगेंस्ट बांग्लादेश रिसेंटली, जिसकी रील वायरल हुई थी एमआई मुंबई इंडियंस के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर। एग्जैक्ट वही स्टाइल का शॉट यहां पेश किया उर्मिल विसारिया ने। ये यूटिलाइजेशन ऑफ पेस, पेस का बेहतर तरीके का इस्तेमाल आप बैटिंग करते किस तरह से करना है, ये ताजा एग्जाम्पल यहां दिया है उर्मिल ने। प्रशांत जेठमलानी और क्विकर वन, वीरू अपीलिंग एंड दैट्स आउट। धीरेन डेडिया इज गॉन। बड़ी विकेट आई है, सेटल हो रहे ऐसे दिख रहा था पिंक पैंथर्स। प्रशांत आकर उन दोनों ही बैटर्स को तकलीफ में रखा और आखिरकार धीरेन का विकेट लेने में कामयाब हुए। वीरू, वेल डन, गुड कैच वीरू गांधी, taking that a very good catch. Well done Viru bhai, well done Prashant Jetmalani. Dhiren is out. What a time to bring in a wicket for the team to break that partnership which was getting settled. And this man I have been saying since beginning, Prashant have been the bowler who's bowled some successful spells for the team in the past as well. And that's what he has been doing now as well. प्रशांत जेठमलानी, क्रूशियल टाइम पर प्रशांत ने विकेट लिया और वीरू के लिए भी वो बहुत ही डिफिकल्ट कैच था, लेकिन उसे आसान किया है। इमरजेंसी नंबर यानी कि स्कोर है 101 एंड दे हैव लॉस्ट द 4th विकेट। निर्मित शाह एके सनी गेट्स ऑफ द मार्क विद दैट सिंगल। बहुत जरूरी है हर ओवर में कम से कम 6 रन तो आए। रिक्वायर्ड रन रेट हालांकि अराउंड 8 है, लेकिन हर ओवर में कम से कम 6 रन आना बहुत जरूरी है यहाँ पर। सो 102 पर 4, 102 फॉर 4। What an over this has turned out to be from Prashant. What an over this was. 4 runs being scored and a wicket in this over, which takes them to a total of 103 on board. So last 7 overs left. They have 60 runs to get.
Now they need a partnership. They need to be very smart on the crease at this particular moment. Both Nirmit and Urmil have to stay there. Expectations are high from this man, Urmil, who is at the non-strikers at the moment, because he has played a great inning for the team. Low full toss being struck too well. The ball is racing straight toward the fielder in the deep at the covers. Right field setup being done by the captain. The captain is too experienced with these guys on the pitch, and he knows what kind of bowlers to be brought in at this particular moment to be in the game. No field change that's been requested by the bowler. The captain did suggest one of the fielder to be sent back, but the bowler says let's stick to the same plan. It's a good striking. Straight toward the fielder at the long on. Singles, as I said, it is not going to hurt much to any of the bowler. Another beautiful delivery there. Flighted delivery, chance of a run out. Bit of a mix-up between both the batters, but they have to settle for a dot delivery. They can't afford to lose any wicket at this particular moment. They would have to stay there. A striking being done. Go straight toward the fielder. Chance of a run out there. Quick run being taken. Good response from the non-striker. A single being taken. Strike being rotated. .34 on board for this man, Nirmit. Expectations are high, but this man with the left arm has got a golden arm for his team. Striking done too well. Great work in the deep by the fielder. And they would have to settle for a run, just a single. And as I said, singles are not going to hurt them much. पाँच हो गए ना? So we are done with over number 1408 on board. So this is time for बैटिंग पावर प्ले. बैटिंग पावर प्ले में अब आए हैं कपिल मकवाना अपने स्पेल की आखिरी ओवर, और बिल्कुल सही टाइम पर आएंगे बिकॉज अभी ओवर बचे हैं सिर्फ 6. इन दो 6 ओवर्स आई थिंक 54 रन्स टू बी स्कोर्ड. 54, हाँ शायद बराबर है 54. मेरी मैथ्स कच्ची है, मैंने आपको पहले बता दिया, बट हमारे स्कोर हमें कंफर्म कर रहे हैं कि यस नहीं 55 चाहिए. 55 in 36 balls. So Mark, oh very smart, सीधे पॉइंट पर पैरी है, खतरा हो सकता है, जरूरत नहीं है इन इस तरह के रनों की, बिकॉज पैरी इज अ वेरी गुड फील्डर. एक्यूरेसी बहुत बेहतर रहती है पैरी की जब भी वो रिटर्न थ्रो करते हैं. डॉट बॉल के साथ बैटिंग पावर प्ले की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों. दिस इज द चैलेंजर्स फाइनल. विल
पे तीसरे और चौथे नंबर पे थी, उनका चैलेंजर फाइनल आज खेला जा रहा है। इसके बाद होगा द ग्रैंड फाइनल्स। Banged in shorter, no chance. Varun Sabo, that will be a choka, much needed one for Pink Panthers. बहुत ही आकर्षक तरीके से उर्मिल विसारिया अपने बैटिंग को दर्शा रहे हैं। उर्मिल विसारिया इज द प्लेयर टू वॉच आउट। यहाँ पिंक पैंथर्स के लिए ही इज द मेन प्लेयर हु कैन स्कोर एटलीस्ट 50% ऑफ द रन्स which is the required। और दूसरी तरफ सनी को भी अपने स्वाभाविक खेल को दर्शाना ही होगा। दूसरी तरफ मार्क यानी कपिल मकवाना विकेट की तलाश जारी रहेगी। ही स्लैश्ड इट हार्डर, क्या बात है, दमदार शॉट, 4 रन स्ट्रेट इनटू द डगआउट ऑफ पिंक पैंथर्स। एक नहीं 2-4। उर्मिल विसारिया, फियरलेस उर्मिल विसारिया, यूवी कैन। जिस तरह से उर्मिल ने ये 2 चौके जड़े ना बॉस, सुपर स्टफ। बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा लेना है। और ओनर डॉक्टर मिशिल पारेख कॉम्बॉक्स में है हमारे साथ। इनकी सिबाका वाली स्पाइल मुझे दिख रही है, क्यों ना भाई। 2 में जहां 6 ओवर में 55 रन चाहिए थे, पहले बॉल डॉट गिरने के बाद 2 चौके आए। अब देखते हैं क्या होगा। स्लोवर वन, उठा दिया। इज दैट अ बिग वन? No, that is a choka. Hat-trick of boundaries. क्या बात है उर्मिल। लीग के आखिरी गेम में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन फाइनल्स में अपने प्रेजेंस को दर्शा रहे हैं। सुपर स्टफ। ये ब्लू जैगवार्स वहां वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी तरफ खेल दिया। सॉलिड स्टार्ट है बैटिंग पावर में। 120 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर। अब 43 रन नीडेड। 6 ओवर में 55 का था, जो अब हो चुका है यहां से 43 का इन 32 बॉल्स, राइट। सो बैटिंग पावर प्ले का बहुत ज्यादा फायदा लेते हुए उर्मिल विसारिया और पिंक पैंथर्स के लिए ऑलवेज ये ग्राउंड फेवरेबल रहा है। और आज फिर से एक बार उर्मिल विसारिया ये प्रूव कर रहे हैं कि वाई दिस ग्राउंड सूट्स पिंक पैंथर्स टीम। और ओनर्स, दोनों ही ओनर बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, यहां कुछ भी हो सकता है। हर बॉल पर वारदातें बदलती है। कैच नहीं है भव्य। पीछे वरुण साबू है। डीप कवर्स पर एक खिलाड़ी तैनात किया था वरुण, जिन्होंने बॉल को रिटर्न किया। अब सनी आएंगे स्ट्राइक पर। उर्मिल ने अपना काम कर दिया है। इस ओवर की आखिरी गेंद बची, इसके बाद एक और पावर प्ले होगा, जहां चेक। Last 5 overs left now. 41 to get from here. What an expensive over that was. 3 cracking boundaries and 2 singles. 14 of the previous over. The momentum has been sent back to the Pink Panthers. What is the captain thinking behind the stumps? What is the message that's been sent by that man who just carried a couple of bottles of water to the batters? $122 on board for the loss of 4 wickets. 41 needed from here in last 5 overs. KD comes back from Wet Enjoy and beautiful delivery to begin the over. Quick run being requested, being responded well. And they have taken a quick run there. Hello. They wanted to strike. They wanted to rotate the strike and bring
the successful man on strike again, who's playing on 48 at the moment in just 29 deliveries. What a performance this has been for the team. And we would have to see what kind of a thought process that he has in his mind, because this time the covers is standing inside the circle. 48 on board for this man in 29 deliveries that he has faced. Another beautiful delivery there. He's providing enough pace on this over. Every single delivery that he's bowling with entire strength. They need a couple of good. KD does well. Look at that. The batsman wanted to rotate the strike. Non-striker was too much keen to get on the strike, and he loses his wicket. Time to get run out and go back in the pavilion. So he departs on 49. Wow, what a time to bring in a wicket. Great work being done by KD. And a striking being done straight toward the fielder at the covers. Prashant standing there. Oh, the momentum was built up by both the batters. And he's been sent back to the pavilion on 49. What an inning that was. Mr. Mittal has joined in. Nirmit and Mr. Mittal there. They need to get these runs for their team if they want to lift that beautiful trophy. And look at that delivery right in the block hole. Could have been another blunder if that would have hit the stumps. But the batsman survives. A strike being rotated, so 2 singles being taken after that wicket that has fallen. 37 to get now and 25 deliveries left. They have half of the team back in the pavilion now. It's all on these 2 guys, because they have enough experience to face these bowlers. With the team, Golden Tigers have chance of a run out again. Oh, you cannot afford to lose wicket at this particular time, especially not the run-outs. So over number 16 comes to an end. 127 on board. Last 24 deliveries left and 36 to get from here.
तो देखिए बैटिंग पावर प्ले अच्छा दिख रहा था पिंक पैंथर्स के लिए, बट वो जो विकेट आया यूवी का, दैट हैज चेंज द मोमेंटम कंप्लीटली। यहां से जीटी को अब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। प्रशांत जेठमलानी इनटू हिज लास्ट ओवर। 2 ओवर में प्रशांत जेठमलानी ने 11 रन देकर 1 विकेट लिया है। अब बचे हुए 4 ओवर्स में 36 रन की जरूरत है। सनी और एमजे, ये दोनों बैटर्स पर निर्भर करेगा पिंक पैंथर्स का ये रन चेज। एमजे ऑलवेज ही इज अ प्राउड फिनिशर, लेकिन देखिए हर दिन सेम नहीं रहता है ना डीजे, अलग अलग हादसे होते रहते हैं हमारे साथ। एवरी डे इज अ न्यू डे, न्यू चैप्टर। सो स्टार्ट यहाँ पहले तो अच्छी करनी पड़ेगी एमजे को। एमजे हैज ऑलरेडी गॉट ऑफ द मार्क, 1 runs अंडर हिज बेल्ट, सो वेरी स्मार्ट प्लेयर, स्ट्रीट स्मार्ट प्लेयर है एमजे। लेकिन प्रशांत जेठमलानी भी जानते हैं कि एमजे को कैसे बांधे रखना है, कैसे उनका विकेट लेना है, बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं एमजे को। प्रशांत जेठमलानी अक्रॉस द विकेट आएंगे बॉलिंग करने के लिए। शॉट ऑफ लाइन बॉल, पुल करना चाहते थे। ये फाइन लेग पर कपिल मकवाना एक मार्क मौजूद है, इनफैक्ट लॉन्ग लेग रीजन पर है, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। सो ही इज एमिंग दैट एरिया। एमजे फ्लाइटेड बॉल हल्के हाथों से खेला है सिंगल के लिए, आसानी से 1 रन रोटेट करेंगे। प्रशांत जेठमलानी को अगर आप टारगेट करने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा सा खतरा भी बढ़ सकता है एज अ बैटर आप पर। निर्मित, सनी, लेट्स सी अक्रॉस द विकेट। प्रशांत जेठमलानी फटाफट से आते हैं, फटाफट से बॉलिंग करके निकल जाते हैं और बैटर सोच में पड़ जाते हैं कि क्या हुआ उस ओवर में। ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉलर प्रशांत। दैट इज द रीजन वीरू ने प्रशांत को बॉलिंग करने का ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है, क्योंकि शॉर्ट रनअप है, 3-4 कदमों का अक्रॉस द विकेट का ये रनअप है, बैटर को सेटल होने देते नहीं है। वीरू भाई इस बार अपने फील्डर्स को फाइन ट्यून कर रहे हैं कि भाई आप सही से रहो, वरना एमजे अगर जगह मिल गई तो भाई बाउंड्री घसीट सकते हैं। स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग सीजन 4 प्राउडली प्रेजेंटेड बाय स्पोर्टिविटी वेंचर्स, चौथा सीजन। क्विकर 1 मिस किया है एमजे ने, एंड प्रशांत का ये इंपॉर्टेंट डॉट बॉल। पिंक पैंथर्स वर्सेस गोल्डन टाइगर्स के बीच आप देख रहे हैं ये चैलेंजर्स फाइनल। एक और, इस बार वाइड है, थोड़ी सी बाहर चली गई वाइड लाइन से। अंपायर का एक योग्य निर्णय। दोनों ही अंपायर किरण सर और हमारे साथ नीलेश सर हैं जो कि किफायती कारनामा कर रहे हैं। स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है, क्विकली रिटर्न थ्रो, राज गोगाटे बैकअप है, एक ही रन जुड़ेगा। एमजे स्पेशलिस्ट है फास्टर्स के अगेंस्ट, पेस बॉलर्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और स्पिनर्स को अक्रॉस द विकेट खेलने की उनकी आदत है। 3 ओवर का खेल बचा है, दे नीड 31 रन्स टू विन, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है वो है प्रति ओवर 10 रन। 132 for 5 after 17 overs. What a spell that was from Prashant. He bowled 3 overs, 16 that he gave away in 3 overs. 31 to get from here now. Every single over they need to get 10 runs now to win this final and lift that trophy. Captain Virat decides to bring in Raj from the mountains end now to bowl over number 18. 31 is the equation in 18 deliveries left now. The ball stayed too low. As I have been saying this since beginning, from the mountains and you cannot expect to have enough bounce on this pitch. Need to be staying bit low than you usually play. 30 to get, 17 deliveries left. Another good delivery, another quicker one. A dot delivery there. 16 deliveries left.
30 to get from here. Raj have bowled a spell that was needed from the captain's end. And a striking being done well above the head of that fielder. And a welcome boundary after a long, long time. What a shot that is. What a time to bring in a boundary for the team. Brilliant connect that was. 137 on board now. 26 to get in 15 deliveries left. What a contest that we are witnessing live here, and you guys are sitting there at home and watching this live on YouTube. Interesting contest that is. Interesting contest this is. 26 to get. Smart cricket. Very smart delivery that was. They're rushing for another run. Will they be able to get it? Is that a wicket? Yes, it is. There wasn't a need of losing that wicket. A man who just struck a boundary just before this delivery is being sent back in the pavilion in a run-out succession. Let's have a look at the replay. The collect that was being done by the fielder in the deep, and look at that throw. Oh, it was way, way outside the crease. No chance for him to be there and keep himself safe. Another run out. That will take them to a total of 138 at the moment with 6 wickets down. 14 deliveries left from here. 25 to get. A left-handed batsman coming in. Right hand, left hand combination. Mr. Mittal and Tej there. Now these two guys have all the responsibility on their shoulders to take that team home. We did see a boundary just before that delivery. We did see a boundary just before that delivery, and right after that, we saw a run out. What a contest this is turning out to be. Mr. Mittal and Tej there. Tej just joining in on the strike, facing 5th delivery. Short pitch delivery that is. Could not have the right control. Not the entire strength. And just a single being scored on that delivery. Should have been hammered toward the leg side. But didn't get the control that was required on that loose delivery. I'm sure Raj would be disappointed with that kind of a delivery as well. But he's been turned out to be lucky that the batsman did not connect that well. A single being taken. Last delivery coming in of over number 18. 24 to get from here in 13 deliveries left. This is going in the air. Any fielder getting settled under it? Oh, he drops that. He drops that. Could have been the first wicket in the account for Raj, but that's really unfortunate. That's a drop catch. Should have been an easy take for the fielder. He misses that completely under the line, it seems. And a couple of runs being taken there. So last couple of deliveries, last couple of overs left from here. 22 to get for the team Pink Panthers to win this match. Firoz, a good over for team GT because they have got a wicket here. Sunny was looking so settled. MG और Sunny की partnership आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन GT, their players, their fielders have been so good throughout the 18 overs. Return throw बहुत बेहतर किया है, and वीरू गांधी, वीरू भाई की जो कीपिंग स्किल्स हमने देखी, स्कोर्ड ऑलमोस्ट 9-10 रन्स बिहाइंड द विकेट. जो स्टॉप किया था कपिल के बॉलिंग पर, वाइडिश लाइन थी, वो स्टॉप विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम. और ये रनआउट्स को कन्वर्ट करना इज नॉट अ इजी टास्क.
ये सारी छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन से आप बड़े मैचेस जीतते हैं। केडी सिंह फार एंड से बॉलिंग करने के लिए आएंगे। 2 ओवर में 22 रन्स दे नीड टू विन द चैलेंजर्स फाइनल। देखिए इसके बाद होगा ग्रैंड फाइनल, जहां ब्लैक स्टैलियंस और ब्लू जैगुआर तैयार हो रहे हैं, वार्म अप चल रहा है। लेकिन सब अब इस मैच को देख रहे हैं। यूट्यूब व्यूअर्स पर लाखों जनता है जो देख रही है मैच को कि कौन जीतेगा। Let's see, 11 needed in every over. ये सिंपल फंडा है, सिंपल मैच है। मित्तल जोशी और तेज दाभोलकर, ये दो बैटर्स को यहां सही से कारनामा करना पड़ेगा। और यॉर्कर लेंथ, सैबी ने 2 कैचेस ऐसे पकड़े ना बॉस, एकदम सॉलिड, और बॉलिंग भी उनकी जानदार रही है। इन 2 ओवर्स सैबी हैज कंसीडर्ड जस्ट 14 रन्स, 14 रन दिए 2 ओवर में, बहुत ही किफायती। सैबी की ये ओवर कितनी जरूरी है, ये सैबी खुद जानते, जो को ओनर है गोल्डन टाइगर्स के। दूसरी तरफ आइकन पिंक पैंथर्स के वाइस कैप्टन मित्तल जोशी। लेट्स सी, वॉच आउट, चैलेंजर फाइनल। लेट्स वॉच आउट, ये जंग, ये रन चेज बहुत बेहतर तरीके से दिख रहा है। मिस क्यों किया है एमजे ने, 1 रन जरूर मिलेगा। दूसरे के लिए गए हैं तेजू, और थ्रो बिल्कुल सही नहीं था। 2 रन टेकन, 2 किफायती रन यहां आए हैं। केडी इज नॉट हैप्पी बॉस। ऐसी एफर्ट, जब अभी अभी हमने कहा कि थ्रू आउट द 18 ओवर्स इनकी फील्डिंग बहुत ही लाजवाब रही है, और ऐसे समय पर आपका थ्रो अगर हल्का आता है तो बॉस मैच में वजन नहीं बढ़ेगा। आपको और बचे हुए 11 इनफैक्ट 10 बॉलों में अच्छी एफर्ट दिखानी है। 10 गेंदों पर 19 रन की जरूरत है। लेट्स सी, विल एमजे गो ऑल गन्स ब्लेजिंग या केडी करेंगे स्लोअर वन। वो सबसे तेज बॉल इस मैच की, ये सबसे तेज गेंद थी। देखिए अपील कर रहे हैं बिहाइंड द विकेट से, और कुछ लोग भी अपील कर रहे हैं, लेकिन एमजे एक ऐसे प्लेयर है, अगर थिन एज भी रहेगा, फेंट एज भी रहेगा, तो भाई एमजे रिटर्न आ जाएंगे। मैच का मोमेंटम चाहे जो वो, ही इज दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। डॉट बॉल, किफायती डॉट बॉल। अब 9 गेंदों पर 19 की जरूरत है। बॉल और रन्स के बीच का जो फासला है वो बढ़ रहा है। देखिए इस फासले को इसी ओवर में कम करना पड़ेगा, आखिरी बॉल तक नहीं रुकना है। वेल डन केडी, रफ्तार के किंग है, और वो जानते हैं कि किस समय पर उनको क्या लेंथ पर बॉल पिच करनी है। 8 balls and 18 runs to win the game। इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन बहुत सिंपल है, लेकिन ये सिंपल इक्वेशन इतनी आसानी से कंप्लीट होगा या नहीं ये पता नहीं। आने वाले मोमेंट, आने वाले लम्हे आपको पता ही चलेगा कि कौन जीतेगा चैलेंजर फाइनल। 8 बॉल और 18 रन, 18 balls and 18 runs। तेजू नहीं, अक्रॉस खेला है तेजू ने। जानते हैं कि दिस इज नॉट दैट शॉट विच वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम तेजू। ड्राइव करना है तो ऑफ ड्राइव ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं तेजू। केडी को अक्रॉस खेलना बहुत डिफिकल्ट है जब केडी अपने बेस्ट फॉर्म में दिखते हैं। इस ओवर की 2 गेंदें डॉट की है, 4 रन दिए हैं केडी ने। वेरी इकोनॉमिकल स्पेल बाय केडी इन दिस चैलेंजर फाइनल। को ओनर है, जानते हैं कि उनका परफॉर्मेंस कितना मैटर करता है, खासकर बैटिंग पावर प्ले में उन्होंने 1 ओवर किया, और अब टुवर्ड्स दैट पेनल्टीमेट ओवर भी अब तक तो किफायती ओवर नजर आ रही है। शानदार एक किफायती ओवर कंप्लीट की। 6 गेंदों पर सिर्फ
4 रन। अब बचा है केवल 6 गेंदों का खेल और 18 रन्स की जरूरत है। गाइस, कीप वॉचिंग स्ट्राइकर्स प्रीमियर लीग सीजन 4। बिग थैंक यू टू ऑल आवर पार्टनर्स, गियर अप स्पोर्ट्स, टीम Gus Cap and Accessories, M-Pop Popcorn with Magic, and a hydration partner Jal Sparsh. What an over that was from Sabi. He just gave away 4 runs in the 19th over. The equation was too gettable. 2 overs, they needed 22 from there. Sabi came in and he just gave away 4 runs. The difference is too huge, but this is cricket, just to let you know. One of the game which is always unpredictable. Now the ball has been handed over to one of the successful man who's bowled, who's played a great inning. Abhimanyu coming in from the mountains end to bowl the last over. And the captain believes in him. That's why he has given away that ball in his hand. Mr. Mittal on strike. Last 6 deliveries left. 18 to get from here. We are watching this live right here in Lonavala at SPJ Stadium, which is one of the best stadiums that you have between Mumbai and Pune. Everybody loves to be here on this particular ground because when you are here, you do not feel that you're playing in India. It gives you a feeling as if you're playing in New Zealand, especially because the mountains are right behind that ground. First delivery coming in from Abhimanyu. This is going in the air. Should be just a single. And a good throw there at the striker's end from the long on fielder. Single being taken in the first delivery itself. The last 5 deliveries left, 17 to get from here. The captain decides to bring in Prashant on the circle at the fine leg area. But the strike has been rotated, which means Prashant would be at the third man inside the circle. Abhimanyu decides to change his side as well. This is the final that you're witnessing live. And you would have an interesting contest that's been all set by both these teams. Pull shot. Great work being done by the keeper there. Chance of a run out. Oh. They have taken that single successfully and the umpire says it's a wild delivery as well. So 2 runs we can add to the total, which means 15 needed and 5 deliveries now. One of the experienced men from the team Pink Panthers comes on strike. Square leg goes outside the circle in the deep. Short pitch delivery there. But they would... Oh, look at that. Look at that running between the wicket. Absolutely wonderful. They've taken 2 more runs there. 4 deliveries left now from here and 13 to get from the rest of the 4 deliveries to win this final. 150 up on board. Mr. Mittal have to strike well for the team. He's taking his time. He's tired. Now last 4 deliveries left. A game of last 4 deliveries now. A final that you're witnessing. 13 to get in 4 deliveries left. Last 4 deliveries left. 13 to get. Is it a total
that the team Panthers would chase down. And look at that. Is that a connection with the bat? Oh, yes. Oh, yes. That's a connection with the bat and goes all the way for a boundary. This is what I said in the beginning of this over. This is cricket. Anything can happen anytime. That's a boundary which is racing towards the fine leg area. Smart shot that's been played by Mr. Mitchell to get a boundary at the right time. 9 to get from here. 9 to get. 3 deliveries left. Oh, Abhimanyu, you have to do it for your team because you have done it with the bat. He sent the fine leg back now. A square leg being sent. Still a discussion of moving the fielders. Nine to get. 3 deliveries left. Interesting final that you're witnessing here. Deep mid-wicket there. And a beautiful delivery there. A beautiful delivery there. They have settled. They have taken a single run quickly. And look at that. There was a chance of a run out. But the keeper misses that completely. Last 2 deliveries left. 7 to get. Oh, what a contest this is. Last 2 deliveries left. 7 to get. Last 2 deliveries left. 7 to get from here. Mr. Mitchell on strike. What are we expecting now? What a delivery that is. And a wicket. And a wicket at the right time. What a wicket to bring in. What a delivery that is. Oh, on the stumps, hitting the pads. And a wicket falling in. How quick that delivery was. Let's have a look at the replay. That was a quicker one from Abhimanyu. Look at that. Straight in the stumps, the umpire raises his finger quickly because he knew that the batsman was standing right in front of the stumps. Just a delivery left from here. 7 to get. Abhimanyu has done it for the team with the bat. Last delivery coming in now. Last 1 delivery is left. 7 to get from here. New batsman Jitin coming in. And the expectation from this man is very straightforward. He has to get a maximum on the first delivery itself and take this match to a super over scenario. Last delivery coming in of over number 20 and the last delivery of the inning. Jitin on strike. Abhimanyu with the ball for the final time. And a wicket on the last delivery as well. And he does it for the team. And the team, Golden Tigers, take the title home. Oh, what a way to end the over. What a way to end the final. It was an interesting one, a close contest that we witnessed. Congratulations to the team, Golden Tigers, and congratulations to the captain, Viraj Gandhi,
who has done it again for the team. It was entirely a team performance that they have put in. I would request you to stick to your screens. We have another final coming in right after a short break.
पता नहीं था कि हम लोग चैंपियंस के फाइनल में, हम लोग का था कि जस्ट एंजॉय करें, एंजॉय करते करते हम लोग चैंपियंस के फाइनल में है। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है। अभी आज आज यहाँ आके हम लोग ने डिसाइड किया चलो जीतते हैं, ये कप भी उठा लेते हैं और 4 मैचेस जीत के फिनिश करते हैं टूर्नामेंट को। बस यही है, बैक फॉर